Now we will start arithmetic instructions. Now we will start arithmetic instructions. First, most important thing to remember is that in arithmetic instructions, flags are affected. In arithmetic instruction, flags are affected. In data transfer instructions, we have seen that flags were not affected, but in arithmetic instruction, flags are affected, and it forms a very important part based on which questions are asked in various competitive exams. So we will look into addition, subtraction, decrement, increment, DCX, INX. It is a continuation of decrement, increment instruction, DAD, DA. This all arithmetic instructions which we are going to see. See, in microprocessor, in microprocessor 8085, there is no provision of multiplication or division. There is no provision of multiplication or division. In higher version of microprocessors, it is available, but it is not available with 8085. So, how we achieve multiplication and division? What is multiplication? Multiplication is multiple addition. And what is division? Division is multiple subtraction. So, by multiple addition, we achieve multiplication in 8085, and by multiple subtraction, we achieve division in 8085. So now let's take all these instructions. Let's take all these instructions one by one. So first instruction is add R. So first instruction is add. First instruction is add. Now see, with add, what all possibilities are available? Add plus resistor pair, add plus resistor pair. We will not consider. Don't think that it is some add here. It is some add here. I am telling that with add, what all possibilities or combinations are there? What all possibilities or combinations are there? Let me delete it only. Otherwise, you will get confused. So add resistor pair, add memory, add 8-bit data, add 8-bit data, add 8-bit data. That is, for example, if I talk about example, then first is add resistor pair. First is add resistor pair. That is add A, add B, add C, add D, add H, add E, add L. This all combinations are possible. This all combinations are possible. This all combinations are possible with add resistor. With add resistor. This all combinations are possible with add R instruction. With add R instruction. So see, if here again I talk about length of instruction, here if I talk about length of instruction, here if I talk about machine cycles, and here again if I talk about number of t states, here again if I talk about number of t states, then see,
For one or two instruction, I am going to demonstrate you in the way I used to demonstrate the data transfer instruction. But once we will get used to it, then we will not focus much upon it, because this we have already studied. We have to focus new things based on arithmetic instructions, that is how flags are affected, etc. See, this is my microprocessor. Here, suppose we have AF, PC, PE, HL, PC, instruction decoder, ALU, CU, and this is my memory. This is my memory. Suppose here comes our data line, and here comes our address line. Here comes our address line. So here we are talking about add R. Here we are talking about instruction add R. Suppose add B. Suppose add B. And the initial address is suppose 3000H. 3000H. Then see, if I talk about the length of instruction, suppose let's start from the beginning, which we used to, how we used to discuss the earlier instruction, that is data transfer instruction. So what first programmer has to load this program. First programmer has to load this program. So programmer will load opcode of this instruction. Programmer will store opcode of this instruction. Suppose it is XXH. Now see, if anything more is to be stored into the memory, no. So I can say that it is 1 byte instruction. It is 1 byte instruction. Now again, now let see its processing. Now let see its processing. So after loading this opcode into the memory, after loading this opcode into the memory, reset button will be pressed. Reset button will be pressed. Then microprocessor will send this initial address 3000H through address line to memory. Through address line to memory, this memory location will get enabled or highlighted. This memory location will get enabled or highlighted. Then microprocessor will send memory read control signal. Then microprocessor will send memory read control signal, and this opcode will be fetched. This opcode will be fetched or read. This opcode will be fetched or read, and it will be brought back into the microprocessor through data lines into instruction decoder. Here the instruction will be decoded. Here the instruction will be decoded, and microprocessor will understand that it has to perform add B. It has to perform add B operation. It has to perform add B operation. It has to perform add B operation. See, what do we understand by add B? See, what do we understand by add B? It means content of accumulator. It means first we should discuss that what is the meaning of instruction add register. Add register, add register, add register. That is, here we have taken add B, add B. So meaning of this instruction is that we have to add content of register B. We have to add content of register B into accumulator.
into accumulator, into accumulator, into accumulator, into accumulator, into accumulator. In arithmetic instructions, we will see that most of the ALU operations are done with accumulator, with content of accumulator, with content of accumulator. Most of the instructions, for most of the instructions, ALU operations are performed. ALU operations are performed with content of accumulator. It is not in all the cases. There are some instructions where the ALU operations are not done with the content of accumulator. The ALU operations are done with resistor or resistor pair also. Resistor or resistor pair also. So if we talk about instruction add resistor, that is add B, then the meaning of this instruction is add content of resistor B. Add content of resistor B into accumulator. Add content of resistor B into accumulator. So now see. So now the instruction is decoded, and now microprocessor knows that it has to add content of resistor B into accumulator. Now see, B and accumulator both are inside the microprocessor. Now see, B and A both are inside microprocessor, so there is no requirement of any other microprocessor function. That is, there is no requirement of any other memory read or memory write. So if we talk about the number of machine cycles, so if we talk about the number of machine cycles, only one machine cycle is required, and that is opcode fetch. Only one machine cycle is required. Only one machine cycle is required, and that is opcode fetch. Now if I talk about T states, then for opcode state 4 T states are required. If I talk about opcode fetch, then 4 T states are required. Then 4 T states are required. Now see, this is our first this is our first combination. See, this is our first combination. Now if we talk about our second combination, if we talk about our second combination, that is add memory, that is add memory. So first let's see what is the meaning of this instruction. See, first we will see what is the meaning of this instruction, that is add memory, that is add memory. Here content of memory, here content of memory is to be added with accumulator. Content of memory is to be added, is to be added with content of accumulator, with content of accumulator, with content of accumulator. And who will give the address of this memory data, and who will give address of this memory data? Then we very well know that content of HL register pair, content of HL register pair act like a memory pointer, 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 act like a memory pointer. Suppose now instead of add B, we have instruction add M, we have instruction add M. Suppose the content of HL register pair, suppose content of HL register pair is 4050, 4050. Suppose 4050 address location is somewhere here, and its content is 10H, and its content
and its content is 10H. And suppose content of accumulator, content of accumulator is 20H. Suppose content of accumulator is 20H. Now see what will happen. Again, same thing will happen. First, the programmer will load the opcode of this instruction into the memory. Then nothing will be required. So again, if I talk about its length, then it is 1 byte instruction. Now coming to machine cycles. After loading opcode into the memory, reset button will be pressed. Then microprocessor will generate initial address into the address line. Now this address location will get highlighted. Then memory read control signal will be sent to the memory, and this memory read control signal will fetch this opcode, and it will bring it to the microprocessor through data line into the instruction decoder. Instruction decoder will decode the instruction, and it will get an information that it has to perform add memory operation. Then what it will do? Then it will look into the content of HL register pair. Because content of HL register pair act like a memory pointer, and it will send 4050 address. H address through address bus into the memory. Now this memory location will get highlighted. Now again memory read control signal will be given, and this memory read control signal will fetch or read data 10H. It will fetch or read data 10H whose address location is 4050H. And what is 4050H? It is nothing but the content of HL register pair. And then this 10H will be brought into the microprocessor, and it will be added with accumulator content. So after this operation, what will be my content of accumulator? My content of accumulator will be 30H. So if I talk about the machine cycles, here two machine cycles will be required. First is the opcode fetch, and second is the memory read. Because we have to read data from memory whose address location is given by the content of HL register pair. So similarly, what will be my T states? My T states will be 40 plus 3T, that is 7T. So these two combinations are completed. Now if I talk about the third combination. That is add 8-bit data. Add 8-bit data. What is the meaning of this instruction? 8-bit data will be added. 8-bit data will be added with content of accumulator. 8-bit data will be added with content of accumulator. Now see what will be operation here. Suppose here we take add, again take 8-bit data, that is 10H. Again take 8-bit data, that is 10H. So let's delete this.
Now see, again, programmer will load opcode of this instruction. Again, programmer will load opcode of this instruction. Fine. Then programmer will load this 8-bit data. Then programmer will load this 8-bit data into the memory. So now see, what will be, what will be its length. What will be its length? It is a 2-byte instruction. It is a 2-byte instruction. Now you can see that after discussing data transfer instructions in so much detail, and after discussing the operation and functioning of microprocessor, how easily now we can find this length, machine cycles and T states. So it is a 2-byte instruction. It is a 2-byte instruction. It is a 2-byte instruction. Now coming to machine cycle, again first this opcode fetch will be done. Again this first this opcode fetch will be done. Instruction will be decoded. Instruction will be decoded. Now microprocessor knows that it has to add this data. It has to add this data which is in memory with content of accumulator. That is, it has to bring this data into the microprocessor. It has to bring this data into the microprocessor. So again, memory read control signal will come here. This data will be fetched and then it will be added into accumulator, and then it will be added into accumulator. So after after execution of this instruction, what will be after execution of this instruction, what will be content of accumulator? It will be 30H. What will be content of accumulator? It will be 30H. It will be 30H. It will be 30H. It will be 30. It will be 30H. In the previous thing also, I think I have taken let me check it. Okay, I will check it. I will check it. Let's discuss this. In the previous thing, I was telling that the content of 4050H was 10H, and content of accumulator is 20H. So there also our result will be 30H. Our result will be 30H. If by mistake I have taken 20H, then it was because I would have considered content of A as 10. But all this thing doesn't matter. This is just an example. You must be just knowing about the operation. That is main. And after that, we are obviously going to solve number of questions based on all this instruction. So again, so if I talk about the machine cycles, if I talk about machine cycles, then here also we will have opcode fetch and memory read. Opcode fetch and memory read. So if I talk about number of T states, we will have 7 T states. We will have 7 T states. So now see, we have discussed all three combination, that is add register, add memory, and add 8-bit data, and add 8-bit data, Now we will discuss that how flags are affected. Now we will discuss that how flags are affected. And then we will have one more combination, and that is add with carry. And then we will have one more combinations, and that is add with carry. Then we will have one more combination, that is add with carry. But that we will discuss later. But first we will discuss that how all flags are affected. So now, before starting our arithmetic calculation and discussion on flags,
we should be aware of some basic conversions. We should be aware of some basic conversions, how decimal number is converted into binary and how binary is converted into hexadecimal. See, this all things we have discussed in details in our digital classes. But if I suppose that there are some students who have not attended my digital class, then you should be aware of some basic conversions because it will be required in arithmetic operations of microprocessor 8085. So see, in decimal 0, if I want to convert it into binary, then it is 0000. In hexadecimal, it is 00h. Similarly, from 0 to 1, 2, 3, we can go on up to 9. It is represented as this and it is written as 09h. But catch is from here, the decimal representation of 10. In hexadecimal, it will not be 10, it will be A. It will be A. 10 will be 10 will be A. 10 will be A. 11 will be B. 11 will be B. 12 will be C. 12 will be C. 13 will be D. 13 will be D. 14 will be E. 14 will be E. And 15 will be F. 15 will be F. These are basic things which I know that you all must be knowing it, but still I just wanted to remind you all these things because it will be used. It will be used in a very large scale in arithmetic instructions. This all you must be knowing. But I think that some people may not be knowing about this if they have not attended digital class or and they are new to this conversions, then this part may be new for someone. So till here we have seen that 15 is represented as F. 15 is represented as F in hexadecimal. What about 16? How 16 is represented in hexadecimal? It is represented as 10H, 17 11H. Similarly, 18, 19, 20, 21, 22, 16H, and it will continue. It will go on. It will go on. I have not written it, but it will go on. Suppose we take an example. Suppose we take an example if it is given that add F plus 7. Add F plus 7. Add F plus 7. So how you can add it? How you can add it? Suppose this is F. So how F is, what is F in a decimal? 15. What is F in decimal? 15. So it will be 15. 7. 15 plus 7. What is 15 plus 7? It is 22. It is 22. Now if I want to convert it into hexadecimal, see what is 22? 22 is 16H. 22 is 16H. So it answer is 16H. Answer is 16H. Suppose we have one another question. F plus 9. F plus 9. And see F 15, 9 same, 24. So in hexadecimal, what it will be? 23 will be 17H. 24 will be 18H. So answer will be 18H. So answer will be 18H. So answer will be 18H. Now again, let's take one more example. FF 54. FF 54. What will be its answer? F is 15. 15, 19. 19. 15 plus 4.
F plus 4, 15 plus 4, 19. What is 19 in hexadecimal? Here 13h, that is 1 will come here, 3 will come here. Fine. Now 1 plus F plus 5, that is 1 plus 15, 16, 16 plus 5, 21, 21. What is 21? 15h. So 15h. This will be my answer in hexadecimal. So this was our conversion. This everyone's know, from 0 to 15 conversion everyone's know, but maybe some are not aware of this conversion, but you should know, at least in microprocessor it will be required. It will be required. Here I have talked only about the summation part. Here I have talked only about the summation part. When I will discuss subtraction instruction, then I will take subtraction examples also. Then I will take subtraction examples also. Then I will take subtraction examples also. Now let start our discussion of how flags are affected based on addition instruction. Based on addition instruction. So suppose we have first example, add B. Suppose we have first example, add B. Suppose content of accumulator. Suppose content of accumulator is FF, and content of resistor B, and content of resistor B is 69. Content of resistor B is 69. Now see, there are two methods of add-in. There are two methods of add-in values. There are two methods of add-in values. See, method 1. Method 1 is you convert FF into binary. You convert 69 into binary, because see what it is. It is in hexadecimal. It is in hexadecimal. So you first convert this in binary. You first convert this in binary, and you do addition in binary. This is first way of adding two numbers. The second way is I can write it is like this: addition in binary. Addition in binary. And what is my method 2? What is my method 2? Add directly into hexadecimal. Add directly in hexadecimal. Add directly in hexadecimal. That is addition. That is addition in hexadecimal. This is little time consuming. This is very by this method you can find results very quickly. So I would also recommend you to go for this method only. You should be able to do addition, subtraction, everything in hexadecimal. In worst case, if you forgot to do this, but you shouldn't forget it, because we have learned all these things in details in digital. But in worst case, if you forget it, then no worry, go for conversion in binary and then do your addition or subtraction. Here we are going to discuss both this method. Here we are going to discuss both this method. Initially I will start with both methods, but once we are little bit comfortable with addition and subtraction in hexadecimal, then I will continue with this method only. This you can do on your own. Fine. So now see, if I convert FF into binary, what I will get? I will get something like this. Fine. If I will convert 69 into binary, if I will convert 69 into binary, then what I will get?
So this table I never remember it. This table I never remember it. You can remember the conversion of decimal to binary if you are able to remember, but I was never able to remember it. And I would also suggest not to overburden your brain with this useless thing. You can it hardly takes less than a minute. It hardly takes less than a minute to write this table. So I would suggest that in exam hall you write this table in a page, and after that you perform all your calculation. But if you are able to remember it, it is well and good. But sometimes what happens is that if you remember it, then you do some silly mistakes. For example, if see, if 5 is this, then you will write the binary conversion of 6 in place of this just by mistake, and you are going to lose 2 marks, 2.5 marks for this silly mistake. So I was talking about 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. This is 6. This is 6. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. And if I talk about 9, 1, 0, 0, 1. Wait a minute. This page is not responding. Yes. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Yes. 1, 0, 0, 1. Now we will perform addition. 1, 1, 0, carry 1. 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 0, 1, 1, carry 1. 1, 1, 0, carry 1. 1, 1, 0, carry 1. 0, 1, 1. Again here. 1, 1, 0, carry 1. 0, 1, 1. 1, 1, 0, carry 1. 1, 1, 0, carry 1. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Fine. This is my output of adding a plus b. So now see how our flags will be affected. Sign flag, zero flag, auxiliary carry, parity, and carry. Now if I talk about the sign flag, then check the D7 bit. It is 0. So 0. Now if I talk about zero flag, is the result 0? No. So it will be reset. This will be 0. If I talk about auxiliary carry, was there carry out from lower nibble to higher nibble? Was there carry out from lower nibble to higher nibble? Yes. So it will be 1. Now if I talk about parity, see, is the number of 1 even? No, it is odd. So 0. If I talk about carry, was there a carry output? Yes, there was a carry out. 0, 1, 2, 0. So this is my content of flag register. So what is this? This is 1. That is, if I talk about what will be my content of accumulator. My content of accumulator will be 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. If I talk about the content of flag register, so it will be 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. If I want to convert it into hexadecimal, then this is 11H. This is 11H.
And here if I want to convert it into hexadecimal, then check it. Six 1000. 68H, 68H, 68H. Now, if I talk about program status word, if I talk about PSW, if I will talk about PSW, so what will be content of PSW? What will be content of PSW? It is a 16-bit register having content of accumulator and flag register. Having content of accumulator and flag register. So it will be 6811H. It will be 6811H. It will be 6811H. So this way addition is performed. So this way addition is performed. This way we find out the flag contents. This way we find out the flag contents. From here we will get content of accumulator. From here we will get content of flag register. So we can find the content of PSW also if it is asked in exam. Arithmetic instructions are very easy. It is based only upon the calculation, simple calculations which we have already learned in digital, and after doing that simple calculation you can just easily find out all the results. You can easily find out all the results. So this was my method 1. This was my method 1. Now if I want to do the same thing, now if I want to do the same thing directly, then see FF69H. So what is my content of accumulator? FF. What is the content of register B? 69H. Fine. 69H. So see what we will get here. F means 15. 9 means 9 is 9. That is 24. That is 24. That is 24. Here we have seen what is 24? 18H. 18H. Carry 1. Carry 1. What it will become? 1 plus F plus 7. That is, we will get 16 plus 6. We will get 16 plus 6, that is 22. See, what is my 22? 16H. What is my 22? 16H. This is my carry. This is my carry. Now see, again, what is the content of accumulator? See again, what is the content of accumulator? It is 68H. It is 68H. It is 68H. And here we have already seen that content of accumulator was 68H. So we are getting the same answer. So we are getting the same answer. Now if you have to find the status of flag. Now here also if you want to find status of a flag, status here, if you want to find status of flag, then see, then here you have to first convert this content of accumulator. You have to first convert this content of accumulator into binary. Only then the status of flag can be calculated. Only then the status of flag can be calculated. Then you may say that sir, it is easy to first convert all this thing into binary, because ultimately we are going to convert it into binary to get a status of flag register. But see, here you have to convert only one result into binary. But if you will go for binary, then if you will go for binary, then you will have to convert 3 results into binary. You have to convert this also, you have to convert this also, you have to convert this also, you have to convert this also. So it is better to go for hexadecimal, and then if it is asked to find the status of flag register,
then convert it into binary, and then find the result. Convert it into binary and then find the result. So in the previous case, we have seen what is 68H, 0110. It is 0110 and 1000 and 1000 with a carry here, with a carry here. Now see again, if I talk about the status of flag register, then we will consider it. Sign flag will be 0, 0 flag will be 0. Auxiliary carry, here also see, was there a carry out from lower nibble to higher nibble? Was there a carry out from lower nibble to higher nibble? Yes, there was a carry out. So auxiliary carry 1, parity again 0, and carry, see, was there a carry out? Was there a carry out from higher nibble? Yes. So it will be again this. So it will be again this. So again we are getting 1. So again we are getting 1 and we are getting 1. I have written it as don't care, but it would not be don't care. Take it as 0. Take it as 0. So again we have got 1 1H. So from method 1 and method 2 we will get same result. Content of accumulator was 68H and content of flag register was 11H. But this method is relatively quicker as compared to the last one. So you should know the addition and subtraction in hexadecimal. It is going to help you in exam. It is going to help you in exam. Now let's take one more example. Let's take one more example. ADI, add immediate 4DH, add immediate 4DH. This is the 8-bit data. This is the 8-bit data which we have to add immediately with content of accumulator, which we have to add immediately, immediately with content of accumulator. Suppose content of accumulator is A3. Suppose content of accumulator is A3. Then let's go for method 1. See, method 1 you can do it on your own. Method 1 you can do it on your own. Convert this into binary. Convert this into binary. Convert this into binary. Then add it and you will get the result. You will get the result. It is very easy. I will discuss here method 2. I will discuss here method 2 and that is A3 and take it in hexadecimal only, and that is 40. Take it in hexadecimal only. Now see D plus E. Now see D plus E. What is my D? D is 13. D is 13. What is my this 3? That is 16. 16. What is 16 in hexadecimal? It is 1. Here it will come 0. Now 1 plus A plus 4. That is 10 plus 15. 10 plus 15. That is F. F0. This is my result. That is, this is my content of accumulator after addition. This is the content of accumulator after addition. Now see, if I want to know the status of flag, sign flag, 0 flag, auxiliary carry, parity, carry. Now see how F0 is represented. F0 is represented as in binary as this. Fine. So what is my sign flag? It will be 1. 0 flag, it is 0. No. Auxiliary carry, was there a carry out from lower nibble to higher nibble? Yes, there was a carry out. Parity flag 4 1, so parity will be set. Carry flag, was there any carry out from higher nibble? Was there any carry out from higher nibble? No. So content of flag register. So content of flag register will be this. So content of flag register is this. If you will convert it into hexadecimal, then it will be 94H. It will be 94H. So if I talk about PSW, content of accumulator is F0 and content of flag register is 94H.
This is my status of PSW. So this is my content of accumulator. This is my content of accumulator. This is my content of flag register. This is my content of flag register. This is my content of program status word register. This is my content of program status word register. By method 2. Method 1 you can do it on your own. Method 1 you can do it on your own. So this was all about addition. Now we will discuss one more form of addition, that is addition with carry. Now let's discuss one more form of addition, that is addition with carry. Addition with carry. Here also there will be three combination, that is ADC. Here also there will be three combination. First is ADCR. Second is ADCM. And third is ACI. 8-bit data. ACI 8-bit data. So let's discuss one by one. Let us discuss one by one. First is ADCR. That is ADC A, B, C, D, E, F, H, L. Any combinations are possible. It means, what is the meaning of this instruction? Add content of register. With content of accumulator along with carry. That is, we have to add A, plus we have to add register, we have to add content of accumulator, plus we have to add content of register, plus we have to add carry. Suppose content of accumulator is 10, content of register is 20, and content of carry is 1. So what will be my answer? It will be 10 plus 20 plus 1, that is 31H. Now content of accumulator will be 31H. Now content of accumulator will be 31H. Now if I talk about the second combination, ADC memory. Suppose content of HL register pair. Is 40-50H. Suppose in memory at address location, suppose in memory at address location 40-50H, data 10H is saved. Now what will be the outcome of this instruction?
it means that we have to add content of accumulator. We have to add content of accumulator with content of memory. With content of memory. Here, what is the content of memory? Content of memory is 10H. And what is the address of this content? What is the address of this content? It is 4050H, and which is same as that of the content of HL register pair. Which is same as that of the content of HL register pair. That is, here it will come 10H. Suppose accumulator is 20H, and suppose and then we have to add carry also. We have to add carry also. So again, what will be the content of accumulator after addition? It will be 31H. Content of accumulator, it will be 31H. This all are simple. This is just continuation of our previous instructions. This is just continuation of our previous instruction with addition of one extra term, that is carry. With addition of one extra term, that is carry. Now come ACI 8-bit data. ACI 8-bit data, or for example, suppose it is ACI 10H. So what is the meaning of this instruction? We have to add content of accumulator with 10-bit data, with carry, Suppose here the content of carry is 0. Here the content of carry is 0. So after addition, what will be my content of accumulator? It will be 30H. It will be 30H. It will be 30H. Now see, again, if I talk about length of this instruction, it will be 1 byte. If I talk about number of machine cycles, one machine cycles, that is opcode fetch. And if I talk about T states, there will be 4 T states. Now if I talk about this instruction, ADC M, if I talk about this instruction, it will also be 1 byte. If I talk about machine cycles, it will be opcode fetch plus memory read. If I talk about number of T states, it will be 7 T states. Now if I talk about this instruction, it will be 2 byte instruction. 2 machine cycles, opcode fetch, memory read, and opcode fetch and memory read, and 4T plus 3T, that is 70 states. So we can see that in all these 3 instructions, it is same as that of add instruction. Because what is the difference between add with carry and with normal addition? It only difference is that we are adding carry also. And where is this carry? This carry is in our flag register. Where is this carry? This carry is in our flag register, which is inside microprocessor. That's why there is not going to be any change in its length or its machine cycle or its T states. There is not going to be any change. Now see, let's take one example of this also. Let's take an example of this also. Suppose this is, here in this one, suppose let's take a fresh program only. So
let's take an example. Let's take an program only. Let's take a small program. What is the small program? First is move immediate A. Suppose take it as FF. FFH. Second is move immediate B 11H. Then add B. Then add B. Then ADC. Then ADC. Again take it as B. Again take it as B. And then halt. And then halt. Any program is concluded with halt. Any program is concluded with halt. So now see what will be the result of this small program. What will be the result of this program, small program? Move immediate A, FFH, that is in A, FFH will be stored. Now move immediate B, 11H. So 11H will be stored in B. Now add B. Now add B. Now suppose we have to add it. Now suppose we have to add it FF plus 11. So F plus 1, 15 plus 1, 16, 1, 0, 1, 0. And here 15, 16, 17 means 1, 1. 1, 1. This is the carry. This is the carry. This is the carry. So now see what will be my content of accumulator. What will be the content of accumulator? My content of accumulator is 10H. And what will be the content of carry flag? What will be the content of carry flag? It is 1. It is 1 because there is a carry out from higher nibble. It is 1. Fine. Now if we will perform this operation. Now if we will perform this operation. What is the meaning of this operation? We have to add content of accumulator, that is 10H. We have to add again content of B register. What is B? It is 11H. Here also if I write by H, plus we have to add carry also. We have to add carry also. What is the carry? Value of carry flag 1. And where we are getting this carry? From where we are getting this carry? We are getting this carry from our previous addition or from our previous arithmetic operation. So previous value of carry is taken. So previous value of carry is taken. Now suppose again we want to add it this. So it is a simple 22H. So after execution of this instruction, my value of A which will be 22H. My value of A will be 22H. My value of A will be 22H and my value of carry flag will be 1. My value of carry flag will be 1. My value of my value, yes, this is very important. My value of carry flag will be 0. My value of carry flag will be 0 because see during this addition, is there any carry out from the higher nibble? Is there any carry out from the higher nibble? No, there is no carry out from the higher nibble. So my value or status of carry flag will get updated. It will get updated. It will get updated. It will get updated. Now suppose after this we have another instruction. Suppose after this we have another instruction. Suppose again take ADC B. Again take ADC B. Then what will be the meaning of this instruction? Meaning of this instruction is add content of accumulator, that is 22. Add content of register B. Content of register B will be same 11 plus add carry. Now we will take value of carry as 0.
because it is updated, because it is updated. So what will be my result? My result will be 33H. So again, after the execution of this program, what will be my content of accumulator? Content of accumulator will be 33H. And what will be the value of carry flag? Carry flag will be my 0. Carry flag will be my 0. So it is very easy. It is very easy. It is just a continuation of addition instruction, but here we are adding along with carry. Here we are adding along with carry. Here we are adding along with carry. So this was all about our add instruction. This was all about our add instruction. Now coming to next instruction, that is subtraction instruction. Now coming to next instruction, that is subtraction instruction. Now coming to next instruction, that is subtraction instruction. Very important. I am going to give you some very fine concept. So please listen to it carefully. So what are its different forms? So what are its different forms? Its different forms are sub-register. Sub-register. Here what all can come? A, B, C, D, E, H, L. The first form is sub-register, similar to addition, which we have already seen. Second form is sub-memory. Third form is subtraction, immediate subtraction. Immediate subtraction from 8-bit data. From 8-bit data. Not data, but it is data. But it is data. Similar to AND only. Similar to AND only. This all we have seen in AND also. That is addition with register, addition with memory, and addition with 8-bit data. So if I talk about its length, so if I talk about its length, then I am talking about subtraction, sub-register, subtraction register, subtraction from register content. So its length will be 1 byte. Its length is 1 byte. If I talk about its machine cycle, if I talk about its machine cycle, then it will have one machine cycle, that is opcode fetch. It will have one machine cycle, that is opcode fetch. If I talk about number of t states, then it will have 4 t states. Then it will have 4 t states. Now if I talk about subtraction from memory content, then if I talk about its length, its length will also be 1 byte. Its length will also be 1 byte. If I talk about the machine cycle, then there will be 2 machine cycle. First will be opcode fetch. And the second one will be memory read. Because data has to be read from the memory. For doing subtraction. And if I talk about the number of t states, then it has 7 t states. Then it has 7 t states. Now if I talk about the subtraction from 8-bit data, so if I talk about its length, it will be 1 byte. If I talk about the machine cycle, it will be 2 bytes. Because 8-bit data is also there. So it will be 2 byte. If I talk about the machine cycle, then it will also have 2 machine cycle.
that is opcode fetch and memory read. Opcode fetch and memory read. If I talk about number of t states, if I talk about number of t states, then it will be 70. Then it will be 70. Then it will be 70. Here I am just giving you some overview, and this is very easy because this all we have seen in addition only. But here I am just giving you some overview for base building, and then I will take it to advanced level, that how actually subtraction works. How actually subtraction works. Here there are many small short tricks and concepts which you should know, otherwise you will make some silly mistake in exam. Now coming to its next part, that is subtraction with borrow. Coming to its next part, that is subtraction with borrow. Subtraction with borrow. This we have seen in addition also. This we have seen in addition also, where we saw addition with carry. This we have seen with addition also, that is we have seen addition with carry. So you will say that sir, whether there is one more flag, that is borrow flag. No, there is no such flag like borrow flag. In subtraction, content of carry, or we can say that in subtraction, carry flag is only treated as a borrow flag. Carry flag is only treated as a borrow flag. That is, content of carry flag will become content of borrow flag. That is, content of carry flag will become content of borrow flag. How this content, how this carry flag is equivalent to borrow flag and everything, that we will see in details. That we will see in details. Don't worry about it, that how carry flag become borrow flag in subtraction. I will deal it with detail, but here I am just telling you different forms of subtraction. Different forms of subtraction. So what will be its first form? Subtraction with borrow. Subtraction with borrow. Here we don't like SUB. Here we write SBB. So first will be subtraction with register content. Second one will be subtraction with memory content. And third one will be subtraction with 8-bit data. Subtraction with 8-bit data. Subtraction with borrow means, suppose we will have content of accumulator. Content of accumulator. So suppose we have anything. We have anything, content of accumulator. If I talk about this instruction, then it will be content of accumulator minus content of register minus content of carry flag, minus content of carry flag, because here carry flag is equivalent to borrow. Now if I talk about this instruction, then it will be content of accumulator minus content of memory minus content of carry flag, minus content of carry flag. If I talk about this instruction, then content of accumulator minus content of 8-bit data minus content of 8-bit data minus content of carry flag 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 minus content of carry flag. So this is the working of this. This is the working of this. This is the working of this. We will see it all. We will see all this in details, but here just you should have a knowledge of its working. So now if I talk about the length, machine cycle and all. So if I take the first one, that is subtraction with borrow with register content, then its length will be 1 byte. Number of machine cycles will be 1. Opcode fetch and number of t states will be 40.
Now if I talk about SBBM, then it is also 1 byte instruction. It is also 1 byte instruction, but here there will be two machine cycles, that is opcode fetch and a memory read and memory read. Number of T states will be 70. Number of T states will be 70. Fine. If I talk about SBI 8-bit, SBI 8-bit, then it is 2 byte. Then it is 2 byte. Then we have machine cycle as opcode fetch and memory read, and the number of T states are 7. Number of T states are 7. Number of T states are 7. Here nothing is dependent upon the carry flag, because carry flag is inside microprocessor only. Because carry flag is inside microprocessor only. So this was some basic understanding of subtraction instruction. Now we will deal it in details, taking some examples, talking about some important concepts and tricks. Now, coming to actual execution of subtraction instruction. Now coming to actual execution of subtraction instruction. So before that, we should know some important points. First point is, in subtraction instruction, carry flag is treated as a borrow flag. Carry flag is treated as a borrow flag. As a borrow flag. Carry flag is treated as a borrow flag. That is, if carry flag is set, then borrow flag is also set. Set means 1. If carry flag is reset, then borrow flag is also reset. So this is the first important property, or you can see, or yes, it is the first important property of subtraction instruction. That is, carry flag is treated as a borrow flag. We will look into it in details. We will take some practical examples and then we will take this in details. There things will be more clear to you. But here you should keep in mind that in subtraction instruction, carry flag is treated as a borrow flag. Now second thing, subtraction instruction is executed in two forms. Subtraction instruction is executed in two forms. First one is two form, or we can say two method, First one is processor method. That is, by this method, microprocessor execute subtraction instruction. And the second one is manual method. By this method, we will solve questions in exam. This is the method by which microprocessor executes subtraction instruction. As we are learning microprocessor, so we should know that how microprocessor processes subtraction method. But it is little time consuming. So in exam, we will follow this method.
You can follow this method also in exam, but it is little time consuming, so we will follow this method. This is also, we can divide it in two form, that is first is in binary form. Binary form, first is the binary form, and second we can say hexadecimal form. Second we can say hexadecimal form. Fine. Second is the hexadecimal form. So first we will learn the processor method. First we will learn processor method, that how microprocessor executes subtraction instruction. So in processor method, let's take an example. Let's take an example. Example 1. Example 1. Suppose we are given a small program. Suppose we are given a small program, move immediate A, comma 30H. That is 30H will be copied into A. Second is move immediate B, comma 25H, B, comma 25H. That is this 25H will be copied into B. Then we have instruction sub B. Then we have instruction sub B. Meaning of this instruction is that we have to subtract content of B from content of accumulator, or we can say that the content of accumulator is to be subtracted, or content of register B is to be subtracted from content of accumulator. Content of register B is to be subtracted from content of accumulator, so we can write it like A minus B. See, can we write this as in this form? Can we write this in this form? Yes, we can also write this in this form. That is, if we can add minus B, if we can add minus B with A, then it will result in A minus B. It will result in A minus B. This all we have seen in digital. This all we have seen in digital in details. So I will not take it in details here, but I will give you some brief overview, so that even if you have not attended the lecture of digital, so you doesn't feel uncomfortable here. So I said that A minus B can be executed in this form also. It can be executed in this form also. So in processor method, to find minus B, to find minus B, so in processor method, to find minus B, 2's complement is done. 2's complement is done. 2's complement. 2's complement is done. We know that a number can be made negative by taking either 1's complement or 2's complement. In microprocessor, 2's complement method is used. 2's complement method is used. 2's complement method is used. So now see that how it works. A is 30H. A is 30H. If I convert it into decimal, it will be 0011 and 0000. Now content of B is 25. So if I convert it into decimal, then 0010 0101. Now if I want to find minus B, then I will take, then I have to find 2's complement of this, then I have to find 2's complement of this. So first I will find 1's complement. First I will find 1's complement, and then I will add 1 here. Then I will add 1 here. It will become 1101 1011. Simple. We have seen this in digital also. We have seen this in digital also. Now we will
Now we will add this two. Now we will add this two. When we will add this two, we will get a minus b. We will get a minus b. So let add it. 0 0 1 1 0 0 0. Minus b is not this, but this. We will add this and this because minus b is this, because minus b is this. So it will come, 1 1 0 1 1 0 1 1. This is a, this is a, this is minus b, this is minus b, and finally we will get a minus b. When we add both this, when we will add both this, we will get a minus b. Then see, add it, it will be 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 carry 1. This is carry. This is carry. This is carry. Now comes a very important concept. Now comes a very important concept in processor method of subtraction. In processor method of subtraction. In processor method of subtraction. That is, we have to complement this carry. We have to complement this carry to find the actual status of carry flag, or we can say to find actual status of borrow flag, because borrow flag is nothing but carry flag. Because borrow flag is nothing but carry flag. Why we are calling carry flag as borrow flag, I will discuss it in details. But here the important concept which I want to tell you is that after performing this addition, after taking 2's complement, and after completing this addition, if we get a carry, then it will be complemented, to get actual result of carry flag, or to get actual result of borrow flag. That is, if I will ask you that what is the status of carry flag, or what is the status of borrow flag, because both are same, then you will say that it is 1 complement, because 1 is carry here, and it is 0. Suppose here we didn't had any carry. Suppose here there was no carry out from the D7 bit. That is, carry out from D7 bit was 0. Then in that case, if I had asked you that what is the status, that is, what is the status of carry flag, or what is the status of borrow flag, because both are same, then you will say that it is 0 complement, that is 1. 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 In the next example, I am going to show you this also. And then I will give you one important result also. But here, this is the way of finding the status of carry flag or borrow flag when we are doing subtraction using processor method. When we are doing subtraction, when we are doing subtraction using processor method, so finally what will be my what will be my content of accumulator? So finally what will be my
content of accumulator. This I will delete it for now because it is not related with this question. I was just giving you an concept. I will take that also. I will take that concept as a question, as an example, as a next example. But here first focus on this. So what will be my content of accumulator? Content of accumulator will be this. What is this? 0. This is 5. It is 5. Not 5. Sorry, not 5. Not 5. It is B. It is B. This is 0 and this is B. This is 0. This is B. This is 0. This is B. 1011 is B. So content of accumulator is 0BH. Content of accumulator is 0BH, and content of carry flag, or you can say that content of borrow flag is 0. Content of borrow flag is 0. Now what will be content of other flags? Now what will be the content or status of other flag? It will depend upon the content of accumulator. It will depend upon the content of accumulator. So if I talk about the sign flag, then it will be 0 because the D7 bit is 0. If I talk about the 0 flag, then it will be 0 because the result is not 0. If I will talk about auxiliary carry, if I will talk about auxiliary carry, there was no carry out from lower nibble to higher nibble. There was no carry out from lower nibble to higher nibble. So it will be 0. If I will talk about parity flag, if I will talk about parity flag, then there are 3 ones. That is, it will be 0. That is, it will be 0. So this all are my status of 5 flags, and this is the status of my accumulator after execution of this program using processor method. Using processor method. Using processor method. Here you can see that 30H is greater than 25H. Here you can see that 30H is greater than 25H. Now we will say, take opposite. Now we will subtract higher number from lower number. Now we will subtract higher number from lower number, and then we will see that what is the result. Then we will see what is the result. Now we will take another example. Suppose we have a program. Suppose we have a program like this. Move immediate a 30H. That is 30H will be copied into register A. Another instruction is move immediate B 45H. That is 45H will be copied into register B. Now we have instruction sub B. Now we have instruction sub B. Here we can see that for register B is having a value greater than register A. Greater than register A. Here register A was greater than register B, and here register B is greater than register A. And then we are subtracting. Now see what will be the result. So again we will do our process like this. A plus minus B. That is, first we will take first we will find 2's complement of register B. First we will find 2's complement of register B, and then we will add it with register A, and then we will add it with register A. So B is 45H. 45 is converted into binary is 0 1 0 0, and 5 is 0 1 0 1. Now if we will take, this is content of B register, this is content of B register. Now we will find 1's complement of it. Now we will find 1's complement of it. So it will be this. Then we will find 2's complement by adding 1 here. By adding 1 here. So it will be 1 1 0 1 1 1 0 1. So now this is content of minus B. Now this is content of minus B.
Now we have to add minus b with content of a, with content of a. So convert a into binary, convert a into binary, it will be 0 0 1 1. This is content of a, this is content of a. Content of minus b is, content of minus b is 1 0 1 1 1 0 1 1. Now we will add it, now we will add it. What we will get? We will get 1 1 0 1 1 1 0 carry 1 1 0 1 1. Here it will be 1, here it will be 1. Here we can see that there is no carry out. Here we can see that there is no carry out. Here we can see that there is no carry out. So now what will be my content of accumulator? My content of accumulator will be this 1110, that is content of accumulator will be E. 1011, 1011 is B. EBH, EBH. Now what will be my content of carry flag or content of borrow flag or content of borrow flag? We have to complement the carry out. We have to complement carry out. Here there is no carry out. Here there is no carry out, that is there is 0 carry out. So we will take 0 complement, that is 1. This is the status of carry flag, or in subtraction carry flag is similar to borrow flag. So it is complement. We have to take complement of carry out. Here there was no carry out, so 0 complement is 1. Now if we will take now if we want to find status of other flag, then we have to refer content of accumulator. Content of accumulator, sign flag will be 1, 0 flag will be 0. Auxiliary carry, there was no carry out from lower nibble to higher nibble, so it will be 0. Parity, it will be set because they are 6 1. So these are my result. This is my content of accumulator, and these are my contents of flag. These are my contents of 5 flags. These are my content of 5 flags. So now we can conclude some important results. So now we can conclude. So now we can conclude some important results. So now we can conclude some important results. Important results. First one is in processor method, in processor method, in processor method, carry out is complemented. Carry out is complemented. Carry out is complemented to find status of carry flag, to find status of carry flag or status of borrow flag, or status of borrow flag. Carry flag is only known as borrow flag in subtraction instruction. So this we have discussed only, that is in processor method, carry out is complemented to find status of carry flag or status of borrow flag. Now one very important conclusion. Now one very important conclusion, it is that if status of carry flag, that is if status of carry flag or status of borrow flag is 0, if status of carry flag or status of borrow flag is 0, it means that my result is positive. We can see here the content of accumulator is 30H, content of register B is 25H. So obviously
we are performing a minus b, so we will get a positive result. We will get a positive result, and this is my positive result, and this is the actual, and this is my actual result also. This is my actual result also. So we can say that if carry flag or borrow flag is 0, then it is a positive result. Then my result is positive. Then my result is positive. Then my result is positive. If carry flag or borrow flag is 0 or reset, then final result is positive. Then final result is positive, and also it is our actual result, and also it is our actual result. Then final result is, we can write, is actual. Then final result is actual and positive. Then final result is actual and positive. And now in this example, we can see that content of accumulator is 30H and content of resistor B is 45H. That is, A is less than B, A is less than B. So if we will perform subtraction instruction, then obviously we are going to get a negative result. Then obviously we are going to get a negative result. And how it is concluded? It is also concluded from my status of carry flag or borrow flag. Because here my status of carry flag or borrow flag is 1. That is, if my status of carry flag or borrow flag is 1, it means my result is negative. And also this is not my actual result. It is, my result is in 2's complement form. This we have studied in digital also. I am not going to discuss again. But the result is in 2's complement form. So to find its actual value, programmer has to again find its 2's complement. Then he will get the actual result. See, if I talk about the content of accumulator, then content of accumulator will be this only. Content of accumulator will be EBH only. If it is asked in exam that what is the content of accumulator after performing this program, then it will be EBH only. It is not that you will again find 2's complement and then that will be the content of accumulator. Content of accumulator will be EBH only, but it is just that this is not my actual result. This is 2's complement of actual result. So if programmer wants to know that what is my actual result, then he has to take its 2's complement. Then he has to take its 2's complement. That is, if I will add it here, that if programmer wants to know its actual value, then what he will do? He will first use this operation. Meaning of this instruction CMA is complement the content of accumulator. To find 2's complement, we first take complement of the content and then we add 1. So this instruction is used to find complement of accumulator, and then we will add 1, that is ADI 01H. These two instructions, when it is combined, then it is used to find 2's complement. In objective also, if only these two instructions are given to you, that is CMA and ADI 01,
and if it is asked that what is its significance, then its significance is that both these instructions helps in finding 2's complement. Both these instruction helps in finding 2's complement. So after sub b, if we will use these two instruction, then the result which we will get will be the actual one. Then the result which the programmer will get will be the actual one. So now if I will conclude another important point here, then it is, if status of carry flag or borrow flag is 1, then final result is negative. Then final result is negative, and it is not actual, and it is not actual. That is, it is in 2's complement form. That is, it is in 2 complement form. It is in 2 complement form. And to find actual result, programmer has to find 2's complement, has to find 2's complement of result, Very important. These two are very important. That is, if the status of carry flag or borrow flag is 0, then the result is positive and actual. But if the status of carry flag or borrow flag is 1, then the result is not actual. It is in 2's complement form. And to find actual result, we have to again take 2's complement of the result. And the result is negative also. So another conclusion, another important conclusion from here, that is, in unsigned number or operation, status of carry flag or status of borrow flag determines whether number or result is positive or negative. It is also very important. That is, in unsigned number, here all the examples which we are taking are unsigned numbers only. So in unsigned number or operation, status of carry flag or borrow flag determines whether number or result is positive or negative. Very important for objective exam. But if we will talk about a signed number, if we will talk about signed number or operation, then status of sign flag will determine whether my number or result is positive or negative. In unsigned number, carry flag or borrow flag determines whether my number or result is positive or negative. And in signed number, status of sign flag determines whether my number is positive or negative. In our course, we will learn only about unsigned operation.
We will learn only about unsigned operation. For signed operations, we have discussed it in details in digital subject. We have discussed this part in details in digital uh, subject. So this was all about the processor method. So this was all about our processor method. In next we will discuss the manual method. Next we will discuss the manual method of subtraction. Manual method of subtraction. Now coming to manual method. Now coming to manual method. So manual method is also two type. Manual method is also two type. First one is binary method. First one is binary method and second one is hexadecimal method. And second one is hexadecimal method. See, the name of this method, it is nomenclature just done by me. It is not any standard this nomenclatures for subtraction. It is only done by me for better understanding of this subtraction. These all methods are not standard. The naming and all is just done by me for simplifying this topic, because there's lot of confusion regarding subtraction in most of you, and because of this only you commit silly mistake in exam. So just clear all your doubt in this sessions. So let's take an example. First, let's take an example. First, we will discuss the binary method. So suppose we have a small program that is move immediate A 30H, move immediate B 25H, and now we have to do sub B. So final, that is we have to find A minus B. But this time we are not going to take 2's complement of B and then add it with A. This time we are not going to take 2's complement of B and add it with A. This time we are going to do direct subtraction. This time we are going to do direct subtraction. See, this direct subtraction and all I have dealt in details in digital. So I am not going to repeat it again here. I am going to directly solve the question. So let's solve it. So content of accumulator is 30. Content of B is 25. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Now we will directly subtract it. Now we will directly subtract it. Now this 0 minus 1, here 1 will come. Then this borrows taken from this, so 1 will come here. Here 0 will come. Here 1 will come. Here we will get 0, 0, 0, 0. So A minus B will result in this. A minus B will result in this. See, I am again telling you that this subtraction, this all I have taught in details in digital in a proper way. So I am not going to repeat it here. I am expecting that you know this subtraction operation, that you know this subtraction operation. That's why I have written it directly here. So now what will be my content of accumulator? So now what will be my content of accumulator? It is 0 and 1011 is B. 0B. So content of accumulator will be 0BH. Content of accumulator will be 0BH. Fine. Now what will be the status of flags? What will be the status of flag? If I talk about the sign flag, then it will be 0. If I will talk about the 0 flag, then it will be 0. If I will talk about the auxiliary carry, if I will talk about the auxiliary carry, this I will teach you. This I will teach you. Very important. Most of the teacher will skip this. They will say that questions will not be asked on auxiliary carry, but it is not that the question will not be asked. We cannot pre-assume everything.
but we should know that how it is calculated. I will show you how it is, how we can find it out. Then comes the parity flag, then comes the parity flag, so it will be 0. Now coming to the most important flag, carry flag. Now coming to the most important flag, carry flag. I told you that in subtraction, carry flag is also known as borrow flag. Why? See, here are we taking any borrow to D7 bit? Is any borrow taken to D7 bit? Is any borrow taken to D7 bit? No, no borrow is taken. No borrow is taken. It means my carry flag, or you can say my borrow flag is 0. That's why we were saying that carry flag is also known as borrow flag in subtraction method. Carry flag is also known as borrow flag in subtraction method, because in subtraction we don't get a carry out of D7 bit. We don't get a carry out of D7 bit, but we have to take a borrow in, to D7 bit in some of the cases. In which cases we will take? Suppose if here the content of accumulator is greater than content of register B, so there was no need of taking any borrow. But suppose my content of accumulator would have been less than content of accumulator B, then a borrow would have been required. So that's why here carry flag, also known as borrow flag, is 0. Indirect operation method, indirect subtraction method, that too in binary form. So I told you earlier also that if carry flag or borrow flag is 0, that means my result is positive. And it is actual. My result is positive and it is actual. So I hope that this is okay with you. Now coming to the auxiliary carry flag. Here I will give you a very important concept. If lower nibble, if lower nibble if lower nibble of result is less than lower nibble of content of accumulator, then auxiliary carry will be set. And if lower nibble of result is greater than lower nibble of content of accumulator, then auxiliary carry is reset. Very important result. To find out status of auxiliary carry while doing manual method. See why we didn't face the problem in finding auxiliary carry when we were doing the processor method, because at that time we were taking 2's complement of B and then we were adding it with A, and then we were adding it with B, and then we were finding that is there any carry out from lower nibble or not for auxiliary carry. But now we are directly subtracting, so there will be no cases of any carry out of this lower nibble. So in that case we have to find auxiliary carry by this method. By this method, and this method will also hold good for hexadecimal method also. We will see. So see here,
What is the lower nibble of result? What is the lower nibble of result? It is B. What is the lower nibble of accumulator? It is 0. It is 0. It is 0. It is 0. So see, lower nibble of result is greater than lower nibble of accumulator is greater than lower nibble of accumulator. Lower nibble of result is greater than lower nibble of accumulator. So auxiliary carry will be 0. So auxiliary carry will be 0. So this is the method by which we can find auxiliary carry. So this is the method by which we can find auxiliary carry. Now we will take another example. Now we will take another example. In which the content of accumulator will be less than the resistor content. In which the content of accumulator will be less. So suppose we have a program like this, MVI 30H, MVI A 30H, MVI B 45H, and sub B. So let's see it. 3 means 0 0 1 1 0 0 0 0 45 45 0 1 0 0 0 1 0 1. So we will subtract it. So here we will get 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Here borrow will be taken. Here borrow will be taken, and it will be 1. So this will be my result. I am again saying that I am not going to teach you subtraction. This you can refer my digital classes. I am doing it directly. So this is my result. So now what will be my content of accumulator? My content of accumulator will be this. That is, it will be E, and 1011 is B. EBH, EBH, EBH. Now see what will be the status of our flags. If I talk about sign flag will be 1. If I talk about zero flag, it will be 0. If I will talk about auxiliary carry, I will discuss it later. If I will talk about parity, then it will be 1. Now most important, if I talk about the carry flag, or if I talk about the borrow flag, then is there any borrow taken? Is there any borrow taken for D7 bit? Yes, the borrow is taken. So it will be 1. And again, we can see that we have discussed it in previous classes, that 1 means if my carry flag or borrow flag is 1, it means the result is negative. It means the result is negative, and it is not the actual result. It is not the actual result. It is 2's complement of actual result. It is in the form of 2's complement of actual result. It is in the form of 2's complement of actual result. So in order to find the actual result, the programmer will again has to find its 2's complement. The programmer will again have to find the 2's complement, that is using these two instructions, CMA and ADI01H. This we have seen. And then he will get the actual result. So see, in the manual method, we don't have to do any complement. In processor, we were discussing that whatever will be the carry, we have to take the complement, and that will be the status of carry and borrow flag. But here we don't have to take any complement and all. Here directly we can find our carry or borrow flag status, and from that we can judge whether our answer is positive or negative, and whether it is in its actual form or it is in
2's complement form, or it is in 2's complement form. Now, coming to the next method, that is hexadecimal method. This is the most preferred method that I will ask you to go for it in exam, because it will save time. And time is very important for competitive exam. So let's take an example. Let's take the same example. MVI A 30H, MVI B 25H, sub B. Now see, we will directly subtract it in hexadecimal form only. See, this also I have taught you in digital. I am not going to explain you again. You please refer my classes of digital. All this we have seen in details and in a very fine way. So we will directly subtract it. So 16, 5, 11, B, and here we will get 0, 0 BH. See how quickly we can find the result if we know the subtraction method in hexadecimal. See how quickly we can find the result if we know the subtraction method in hexadecimal form. So please refer my classes of digital if you are not comfortable in it. So this is my content of accumulator. If now I want to find the status of my flag, so I will first convert it into binary. B is 1011. So again see, sign flag 0, 0 flag 0, auxiliary carry, we will look into it, parity 0. Now coming to carry flag, very important. See, is there any borrow for higher nibble? For higher nibble? No, there is no borrow for this operation, because content of accumulator is greater than content of B. So my carry flag or borrow flag is 0. That is, my result is positive and it is the actual answer. Now let's take another example. MVI A 30H, MVI B 45H, sub B. So what we will get? We will get 30, 45. 30 and 45. 16, 5, it will be B. It will be 2, 18, 18 and 4, 18 and 4, 14. E. EBH. EBH. This is the content of accumulator. Now to find the status of flag, convert it into binary. 1110 and B is 1011. 1011. What will be my carry sign flag? Status of sign flag 1. What will be the status of 0 flag? 0. Auxiliary carry, we will find it. Parity 1. Now coming to carry flag, very important. Carry flag or borrow flag. Is there any borrow for this higher nibble? Is there requirement of any borrow for this higher nibble? Yes, we have taken the borrow because content of accumulator is less than content of register B. So it will be set. It is set, that is this result is negative and it is in 2's complement form. Programmer has to take its 2's complement using CMA and ADI01H, and then they will get the actual result. Now coming to auxiliary carry, we have missed auxiliary carry here also. See what is the content of accumulator? It is B. What is the lower nibble of
our result. What is the lower nibble of our result? It is B. What is the lower nibble of accumulator? It is 0. This is greater than this. This is greater than this. So auxiliary carry will be 0. Now come into this. Now come into this. Here also it is B. It is 0. So my auxiliary carry will be 0. So my auxiliary carry will be 0. Suppose we had something like this. Suppose we had something like this. Suppose we had something like this. 3b 3b 1 1. This is the content of accumulator. This is the content of resistor B. This is the content of resistor B. Now we are doing subtraction. Now we are doing subtraction. B minus 1 A, 3 minus 1 2. This is the result. Now see what is the lower nibble of output A. What is the lower nibble of accumulator? What is the lower nibble of accumulator? It is B. That is accumulator content is greater than lower nibble of our result. So in this case auxiliary carry will be set. So in this case auxiliary carry will be set. So this is very important concept of finding auxiliary carry when we are doing subtraction manually. When we are doing subtraction by manual method, that is either by binary form or by hexadecimal form or by hexadecimal form or by hexadecimal form. So this was all about our subtraction instruction. So this was all about our subtraction instruction. Very important for your exam point of view, because it is little complex. Because it is little complex. For this you should have a very good understanding of digital part, that how we are doing subtraction in binary form, by taking 2's complement form, by doing direct subtraction in hexadecimal form. And then there are many short tricks which we should know to find out the status of flags, and to determine whether the result is positive or negative, and if it is negative, then what the programmer has to do more. Based on this instruction only, we have a logical instruction, that is compare instruction. Based on this subtraction instruction, we have a logical instruction, that is compare instruction. We will look into it when we will deal with logical instruction. We will look into it when we will deal with logical instruction. So now we have completed all data transfer instructions. We have seen all data transfer instructions, like we have seen MOV, MVI, LXI, STA, LDA, STX, LDX, SHLD, LHLD, in, out, SPHL, PCHL, XCHG, XTHL. This all we have seen. But in data transfer instructions, there are two more instructions which comes in the category of data transfer instruction, and that is push and pop, and that is push and pop. But these two instructions we will take up with logical instructions, call and return. There we will see call, return, push, pop in one go, because all these instructions are related with stack and stack pointer. So we will look into it at that time. But if we talk about push and pop, then it comes under the category of data transfer instructions. So now after completing it, we will look into all the arithmetic instructions of 8085 microprocessor. Now coming to next instruction, that is increment instruction. That is increment instruction. That is increment instruction. We can divide increment instruction in two parts. We may divide increment function increment instruction in two parts. First part is INR.
register, INR register, or INR memory, or INR memory. And the second part is INX register pair. INX register pair. So we have divided increment instruction in two parts. First is INR register, INR memory, and the second is the INR INX register pair. So see, what is its meaning? What is its meaning? Its meaning is that it will increment, it will increment, it will increment content of register. It will increment content of register, content of register, that is this instruction INR R, INR R. It will increment content of register or content of memory, or content of memory, or content of memory. For increasing content of register we use INR R, and for increasing content of memory we use INR M. By how much amount it is incrementing? It is incrementing it by 1. It is incrementing. It is incrementing it by 1. It is incrementing it by 1. So what is INX RP doing? It is increasing. It will increment. It will increment content of register pair. It will increment content of register pair, content of register pair by 1. It is also increasing content by 1. It is also increasing content by 1. It is also increasing content by 1. But these two registers are increasing content of register and memory respectively, and this instruction is increasing content of register pair. Content of register pair. Now see, after execution of instruction, result is stored in operand. Result is stored in operand. In case of increment instruction, results are not stored in accumulator, which we have seen in most of the cases. But in increment and decrement instruction, which we will look next, the results are stored in the operand itself. Results are stored in operand itself. Result is stored in operand. Result is stored in operand. Here in this case operand is register itself. In this case operand is memory. In this case operand is register pair. Fine. Internally addition is performed. To increment register or register pair or memory, what microprocessor is doing? Internally addition operation is performed. Internally addition operation, internally addition operation is performed, Same is here, addition operation. Here also addition operation is performed. Addition operation is performed. Fine. One very important difference between INR, and INX. And INX is, in INR
Carry flag is not affected. Carry flag is not affected. That is, after execution of INR instruction, the carry flag will remain in its previous state. Will remain in its previous state. Remaining flags are remaining flags. Remaining flags are affected. Remaining flags are affected based on content of based on content of based on content of operand based on content of operand based on content of operand. So this is important. In objective exams, such questions are asked that in increment instruction, will carry flag be affected or not? It is not affected. It is not affected. Now coming to INX, no flags are affected. Now coming to INX, no flags are affected. No flags are affected. In this, carry flag is not affected, rest are affected based on the content of operand, but here no flags are affected. But here no flags are affected. So now let's discuss each instructions INR R, INR M and INX register pair one by one. So first we will discuss INR R. So INR register, INR register, INR register. So it can be, anything. It can be anything. B, C, D, E, H, L. It can be anything. It can be anything. Now, if we talk about the length of this instruction, if we talk about the length of this instruction, then it will be then it is a 1 byte instruction. It is a 1 byte instruction. It is a 1 byte instruction. It is 1 byte instruction. If we talk about machine cycle, then only one machine cycle will be required, and that is opcode fetch. Only one machine cycle will be required, and that is opcode fetch, and that is opcode fetch. Because all these registers are inside microprocessor only, so after fetching the opcode, the microprocessor will increment content of each registers. So if we talk about the T states, so if we talk about the T states, so if we talk about the T states, then it will be 4T. Then it will be 4T. Fine. Now coming to the next one. Now coming to the next one, that is INR memory. INR memory. So if we talk about its length, so if we talk about its length, then it is also 1 byte instruction. It is also 1 byte instruction. If we talk about machine cycle, if we talk about machine cycle, then see what this instruction is, what this instruction will do. See what this instruction will do. What this instruction will do. Suppose this is my microprocessor. This is my microprocessor. This is my microprocessor having HL register pair. Having HL register pair. Suppose it is 4050. Suppose it is 4050. And this is my memory. And this is my memory. And here there is address location 4050H. In memory, we have one address location 4050H having content
10h. Then what is the meaning of this instruction? Meaning of this instruction is incrementing memory content, incrementing memory content, that is incrementing 10h, incrementing memory content 10h, whose address location, whose address location is the content of HL register pair, is the content of HL register pair. So functionality of this memory register we have now seen number of times, so no need to repeat it again and again. So for it, what microprocessor has to do? For it, what microprocessor has to do? First, it has to perform opcode fetch. No doubt, this is this is always our first machine cycle. It has to perform opcode fetch. Fine. Then it has to fetch this data also. It has to fetch this data also. It has to fetch this data also. So we will have memory read. So we will have memory read. After fetching this data, it will come inside microprocessor. It will come inside microprocessor. Microprocessor will increment it by 1. Microprocessor will increment it by 1. Microprocessor will increment it by 1. And then microprocessor will again store it back into the memory. And then microprocessor will again store it back into the memory, and now the memory content will be 11h, and now memory content will be 11h. So another machine cycle will be memory write, memory write. So three machine cycles are required here. So three machine cycles are required here. And if we talk about t states, then 10 t states are required. Then 10 t states are required. Then 10 t states are required. Fine. I hope this is also clear to you. I hope this is also clear to you. Now coming to next instruction, that is INX register pair. That is INX B, B means BC, D means DE, H means HL, H means HL, H means HL. Fine. Now if we talk about its length, now if we talk about its length, now if we talk about its length, then it is also 1 byte. It is also 1 byte instruction. If we talk about machine cycle, then opcode fetch is there. Now opcode fetch is there. Now these register pairs are inside microprocessor only. This register pair is inside microprocessor only. So the increment will be done inside microprocessor. So only one machine cycle opcode fetch is required. Now if we talk about number of t states, then it is an exception, because here 6 t states are required for opcode fetch. It is an exception. It is an exception. It is an exception. It is an exception because 6 t states are required for opcode fetch, because 6 t states are required for opcode fetch. So this is all our working and properties of increment instruction. So now let take some example. So now let take some example. So now let take some example, and from there we will see how carry flags are affected and how carry flags are affected. Now let's take an example. INR register. Suppose register B. Suppose content of B is, FFH. Suppose content of B is FFH. Then it will be incremented by 1. It will be incremented by 1. So it will be 0,
F0, this 1 is the carry. Ignore it, ignore it, ignore it, ignore carry, ignore carry, ignore carry, ignore carry, ignore carry, because carry flag is not affected in increment instruction. So now what will be my content of resistor B? So now what will be my content of resistor B? It will be 00H. It will be 00H. Now if we talk about our flag, now if we talk about our flag resistor, now if we will talk about our flag resistor, then see, sign flag, it will be, if I will expand it, but there was no need of any expansion, it is 0 0 only. So sign flag 0 0 flag will be set. Auxiliary carry, yes, there was a carry out from lower nibble to upper nibble, so it will be set. Parity flag will be also set, because number of 1 is even. Now carry flag, it will be in its previous state. This is important. It will be in its previous state. 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 It is not affected. It is not affected. What will be the content of accumulator? It is not affected by this instruction. It is not affected by these instructions. So these are some important properties. So these are some important properties. Now let's take one another example also. Suppose INX register pair B, INX register pair B. Now suppose BC, the content of BC is 4050H. So after incrementing it by 1, what will be my content of register pair BC after execution of this instruction? It will be 4051H. Easy. This all are easy. This all are easy. This all are easy. Fine. Now suppose we take another. Now suppose we will take another instruction. Suppose we will not suppose. Now we are taking another instruction. We are taking another instruction. I will do some modification here only. I will do some modification here only. This was my increment instruction. This was my increment instruction. Now I will take decrement instruction. Very similar. Both are very similar. Just in one increment is taking place by 1, and in another, this one in decrement, decrement will take place by 1. So it is decrement instruction. It is decrement instruction. So in place of INR, we will write DCR. We will write DCR. Now again, in place of here INR, we will write DCR. DCR register, DCR register, DCR memory, DCR memory, DCR memory, and it is DCX register pair, DCX register pair. So decrement instruction is also two type. First is the decrement register or decrement memory, and another is decrement register pair, decrement register pair. So here also we will do some modification, like it will decrement. It will decrement. It will decrement content of register or content of memory by 1. Here also result will be stored in operand, and here internally
subtraction operation is performed. Here internally subtraction operation is performed. Now coming to this DCX register pair. So here also it will decrement, it will decrement, it will decrement content of register pair by 1. Result is stored in operand only, and here also subtraction operation will be performed. Here also subtraction, here also subtraction operation will be performed. Fine. Now again coming to an important difference between DCR and DCX. Here also carry flag is not affected and remaining flags are affected based on the content of operand, and in case of DCX no flags are affected, similar to that of INX. So this increment decrement is very similar, everything is same. Only thing is that in INR increment is taking place by 1 and in DCR or DCX decrement is taking place by 1. Now here also if we will talk about its property DCR, so it will be also 1 byte. Machine cycle will be opcode fetch only. T states will be 40 only if we talk about DCR register. If we talk about DCR memory, if we will talk about DCR memory, then here also everything will be same. 1 byte opcode fetch, memory read, memory write. Only suppose here we had our content as 10H initially it is 10H, initially it is 10H. So now what will be if we will so now in play now again it will be this data will be taken, this data will be taken. Suppose here is the 10H, so this data will be taken into the microprocessor. Here it will be decremented by 1 and it will be brought back into the memory again. So if we will decrement 10H by 1H, so what will be its result? This F0, 0F, 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 0FH, 0FH. This will be my result. So number of T states will be 10 only. Now if we will talk about this DCX register pair, if we will talk about this DCX register pair, here also length will be 1 byte, machine cycle will be opcode fetch only, and T states will be 60. T states will be 60. T states will be 60. Fine. Now here also we can take example. Here we were incrementing 1, and in DCR we will decrement 1. If there is any borrow, we will, if there is any borrow, or we can say if there is any carry, so we will ignore it. The result will be stored in the respective register only. And similarly our flag status will change. Except our carry flag, because it will be in its previous state only. So I am not taking example of DCR because it is very simple. If we know subtraction, then there is nothing to teach you again subtraction again in this instruction, because we have already learned subtraction in a detailed way. Coming to one important concept, or significance of increment and decrement function. If we talk about significance of increment
decrement function. If we talk about significance of increment and decrement function, so what is the significance? See, these instructions, significant and decrement instructions are used in program which has counter in it. They are used in programs which has counters in it. Suppose we want to form a loop. If we want to write a program, if we want to write a program where we want some set of instructions to be executed in a loop, to be executed in a loop, to be executed in a loop, then we will require counters. Then we will require counters. Then we will require counters. And that part is taken care by increment and decrement function. That part is taken care by increment and decrement function. Suppose we want to prepare a program where we want loop to go up to 255 times. We want our loop or counter to go up to 255 times. Then what we can use, if we want it to go in a increasing way, ascending way, then we can take INR. Any resistor we can take, suppose B, and suppose content of resistor B is FF. Content of resistor B is FF. FF is the maximum value. FF is the maximum value which can be stored in a resistor. So if we will convert this FF, into decimal, what it will be? It will be 255. It will be 255. It will be 255. So we can use INRB, or we can also use DCRB to form counter or to form a loop. It basically depends upon the programmer that in which form he wants to write the program. See, this type of programs I am not taking it right now. This type of programs I am not taking it right now, because for this we require concept of jump also. We require concept of jump, and some other concepts are also required. So I am not taking these instructions, but these instructions, these programs and significance of this increment and decrement functions, or programs based on this significance, we will take number of programs in later half of our course. We will solve number of questions based on this concept. Many previous year questions are also based on this concept. We will take it in a detailed way, but here I am just trying to brief you the significance of increment decrement function. That is, they are used for forming counters. Now see, by using INRB and DCRB, what is the maximum value of counter which we can form? It is 255. But suppose we want a counter of 256 or of 256 times. Suppose we want to form counter of 256 times or 1000 times. That is, if we want to form counter greater than 255, then what option is available with us? Then in that case we cannot use INRB or DCRB. In that case we have to use INX resistor pair or DCX resistor pair. In that case, if we want to form a program having counter more than 255 times or loop more than 255 times, then we will require INX resistor pair or DCX resistor pair. Suppose for example, if we will take, let us wait, this page will get loaded. It will get loaded. So
if we will use INX B for BC. So what is the maximum, what can be maximum content of BC? What can be maximum content of BC? It is FFFFH. So if we will convert this into decimal, what we will get? We will get 65535. 65535. This is the maximum value. This is the maximum value. That is, this is the maximum value of counter. This is the maximum value of counter, or this is the maximum number of loops which can be executed, by using INXB or DCXB or DCXB. That is, if we want to have counter, or if we want to have a number of loops less than 255 times, then we can use INR or DCR. But if we want to have a counter, or if we want to run loop for more than 255 times, for more than 255, for more than 255 times, for more than 255 times, but it will be for more than 255, for more than, you can write it like this, for more than 255 times loop, and less than 65535, and less than 65535, then we will required INX, then we will require INX or DCX, then we will require INX or DCX. So in a nutshell, we can say that significance of INR DCR is to write program having loops, having programs having loops, having loop less than or equal to 255, because maximum content of any register can be FFH, and if we will convert it into decimal, it will be 255 only. Similarly, if we talk about the significance, of INX or DCX, then it will be to write a program having loops less than or equal to 65536, because maximum content of any register pair can be FFFFH, and if we will convert it into decimal, then we will get this value. This is very important for your objective point of view. Questions are asked, and can be further asked in any PSU or in ESE objective exam. So please go through it. I think it is clear to you. Now coming to next arithmetic instruction. That is DAD. It is an important arithmetic instruction. Because it performs 16-bit addition. See, we have an instruction for addition, that is add register or memory.
or 8-bit data or 8-bit data. But this add instruction performs 8-bit addition. This add instruction performs 8-bit addition, but DAD instruction performs 16-bit addition. But a DAD instruction performs 16-bit addition. It is very important significance of this instruction. Now see, what is this instruction? Register pair to HL register. Register pair to HL register. What it performs? It performs 16-bit contents of specified register pair. 16-bit contents of specified register pair are added to the contents of HL register and sum is saved in HL register. That means content of any register pair, content of any register pair, 16-bit content of any register pair is added to the 16-bit content of HL register pair, and the result is stored in HL register pair only. In this, accumulator is not affected. In this, accumulator is not affected. 16-bit content of any register pair, 16-bit content of any register pair is added into the 16-bit content of HL register pair, and the result is saved in HL register pair only, and content of accumulator is not affected. This we also know, the contents of source register, that is content of source register pair, will also not get altered. This we know, we have seen it in previous instructions also. Now, if result is larger than 16 bits, then carry flag is set. Other than that, no flags are affected. In this, only carry flag is affected. In this, only carry flag is affected, and other than carry flag, no other flags are affected. No other flags are affected. Now if I talk about the length of this instruction, now if I will talk about length of this instruction, then it is 1 byte instruction. It is 1 byte instruction. If I talk about the machine cycles, then 3 machine cycles are used. Then 3 machine cycles are used. That is opcode fetch, that is opcode fetch, bus idle, bus idle, bus idle. If I talk about the number of T states, if I talk about the number of T states, if I talk about the number of T states, then it is 10T. Then it is 10T. What is meaning of this bus idle machine cycle? What is the meaning of this bus idle machine cycle? Its meaning is that during this state, during this state, the data bus is in idle state. The data bus is in idle state. That is, microprocessor doesn't communicate with either input output or memory device during this period. Bus idle means data bus is idle during this period. Data bus is idle during this period, and microprocessor doesn't communicate or interface. Microprocessor doesn't communicate or interface with input output and memory device during this period. So this is my length, machine cycle, and number of T states. Now let take some examples of these instructions. Now different forms of
DAD instruction. Different forms of DAD instructions are DAD B, B means BC, DAD D, D means DE, DAD H, H means HL, DAD SP, stack pointer, DAD SP, stack pointer. Meaning of this instruction is that content of a BC register pair is added with the content of HL register pair. Meaning of this instruction is content of DE register pair is added with the content of HL register pair. Meaning of this instruction is content of HL register pair is added with HL register pair only. That is, it is a kind of multiplication. It is a kind of multiplication by 2. Multiplication by 2 operation. Multiplication by 2 operation. Or we can write it is equivalent. It is equivalent. It is equivalent, or we can say that it is equivalent, or we can say that it is equivalent to multiplication by 2 operation. Multiplication by 2 operation. That is, suppose if content of HL register pair is 0 0 0 2, and if we perform DAD H operation, if we perform DAD H operation, then content of HL register will get added with it. So what will be its result? Its result will be 0 0 0 4. So it is a kind of, or it is equivalent to multiplication by 2 operation. It is equivalent to multiplication by 2 operation. Now coming to significance of this instruction, DAD register pair, that is content of DAD stack pointer, DAD stack pointer, that is content of stack pointer will be added to HL register pair. What is its significance? Its significance is that it displays content of stack pointer. It display content of stack pointer. See, stack pointer is not visible to microprocessor, to programmer. Stack pointer is not available with programmer. Its content is not visible to programmer. So if programmer wants to know the content of stack pointer, if programmer wants to know content of stack pointer, then he can use this instruction. 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 See, based on this, if we can write a small program, that how programmer can find out the content of stack pointer. That is how programmer can find out. That is how programmer can find out content of stack pointer. Then see, first he will write load immediate HL register pair with 0 0 0 0 H. That is, content of HL register pair will be 0 0 0 0. Fine. Then a programmer will use instruction DAD register pair. Programmer will use instruction DAD register pair. Suppose this is my stack. Suppose this is my stack and my data is filled up to here. Data is filled up to here. So where will be my stack pointer? My stack pointer will be somewhere here. Stack pointer denotes, it points
to data at the top of the stack. It points to data at the top of the stack. Suppose it is 0002. It is 0002. That is content of stack pointer is 0002. So after execution of this instruction, what will be my content of HL register pair? Content of HL register pair will first get added with content of a stack pointer, and so its final content. So its final content will be 0002. And we can see that what is this? This is basically the content of stack pointer. That is the content of stack pointer which was initially not known to programmer. That is content of stack pointer which was initially not known to programmer is stored in HL register pair. Now we have to display this content to programmer. Now we have to display this content to programmer. So how we can display it? So how we can display it? We can use move a comma L. So 02 will be copied to accumulator. 02 will copy to accumulator. Then we will use out instruction. Out 01H. So at memory, so at output device, suppose this is my output device. This is my output device at 01H. This is my output device. This is my output device. So at location, 01H. So at location 01H, 02 will be saved. Now again I will do move operation, move a comma h. The content 00 will be copied to accumulator. Then I will use out 02H. That is at 02H, 00 will be copied. So this is available with the programmer. And this is the content of stack pointer. So programmer will know what is the content of stack pointer. So this is the significance. These two significance are important for your objective exams. Now let's suppose take another example. DAD B. Suppose content of a register pair is, take anything, FF01H, and content of a HL register is, take anything, 7564H. So now after this operation, both this will be added, FF01. It will be added. What will be the result? Here we will get 5, 6, F, and F plus 5. F plus 5. So we know that 16 is 01H, 17 02H, 18 03H, 19 04H, 20 05H. This I have written wrong. Ignore it. See, 10 is A, 11 is B, 12 is C, 13 is D, 14 is E, 15 is F, 16 is 10,
17 is 1 1, 18 is 1 2, 19 is 1 3, 20 is 1 4. Then see, F means 15, 15 plus 5, 20, 20 means 1 4H. 1 will come here. Now F plus 1, F plus 1 is 16, 16 plus 7, 16 plus 7, that is 23. So 21 will be 1 5H, 22 will be 1 6H, 23 will be 1 7H. So here 7 will come and here 1 will come. This one will be the carry. In DAD register, in DAD instruction, if there is a carry out, if there is a carry out, if there is a carry out of the 16-bit, then carry flag is affected. Then carry flag is affected. Only carry flag is affected in this instruction. No other flags are affected. Other than carry flags, no other flags are affected. Other than carry flags, no other flags are affected. So this was all about our instruction DAD. This was all about our instruction DAD register pair. Now coming to first logical instruction. Now coming to first logical instruction, we have AND instruction. AND instruction. Different forms of AND instructions are ANA register, ANA register, ANA memory, ANA memory, ANA, ANI, and immediate, 8-bit data, and immediate 8-bit data, and immediate 8-bit data, and immediate 8-bit data. So let's take it one by one. So first is ANA register. First is ANA register. Here we can have anything. Here we can have anything. ANA accumulator or register B, C, D, E, H, L. What is its function? What is its function? Its function is to and its function is to and content of accumulator, to and content of accumulator, content of accumulator, content of accumulator with content of register, with content of register, with content of register, and result is stored in accumulator, and result is stored, and result is stored in accumulator, in accumulator, and result is stored in accumulator. So this is the function. So this is the function. So this is the function. So if I talk about the length of this instruction, if I talk about the length of this instruction, so it is a 1 byte instruction.
It is a 1 byte instruction. If I talk about the machine cycle, if I talk about the machine cycle, then only one machine cycle, that is opcode fetch, is required. Then only one machine cycle, that is opcode fetch, is required. Because all these registers are already in microprocessor, so microprocessor only needs to fetch the opcode and then perform AND operation with accumulator and register. So if I talk about the T states, so if I talk about the T states, it is 4T. It is 4T. It is 4T. Fine. Now coming to next instruction based on AND operation. So second one is ANA memory. Second one is ANA memory. If I talk about its function, if I talk about its function, if I talk about its function, then it performs AND operation. It performs AND operation with content of accumulator, with content of accumulator, with content of accumulator, with content of accumulator, and content of memory, and content of memory whose address, whose address is given by, is given by content of HL register pair, content of HL register pair. This all we have seen earlier also, that how we deal with memory register. So if I talk about its length, so if I talk about its length, and here, and content is stored in accumulator, and not content, result, and result, and result is stored, and result is stored in accumulator, accumulator. So if I talk about its length, then it is also 1 byte instruction. It is also 1 byte instruction. If I talk about machine cycles, then two machine cycles will be required. First one will be opcode fetch. First one will be opcode fetch, and second one will be memory read. Second one will be memory read. And after reading this data of memory, AND operation will be performed with the content of accumulator, and the result will be stored in accumulator itself. Result will be stored in accumulator itself. Now if I talk about the T state, now if I talk about the T states, then it is 70. Then it is 70. Then it is 70. Now coming to the third one, coming to the third one, it is AND immediate. It is AND immediate 8-bit data. It is AND immediate 8-bit data. If I talk about its function, if I talk about its function, then content of accumulator is then AND operation is performed. AND operation is performed between, AND operation is performed between content of accumulator and 8-bit data, and 8-bit data. I am writing it in short. You can elaborate it in your notes, or you can refer my note. It is written proper. Proper definition is given there. Now if I talk about its length,
if I talk about its length, then it is 2-byte instruction. Then it is 2-byte instruction. One is for opcode and one is for data. If I talk about the machine cycle, if I talk about the machine cycle, then it will have two machine cycle. One is opcode fetch and the other one will be memory read, to read or fetch the data. If I talk about the T states, if I talk about the T states, then it will also have 7 T states. Then it will also have 7 T states. So this was all about different forms of AND instruction. This was all about different forms of AND instruction. Now very important, coming to properties of AND instruction. Now very important, coming to properties of AND instruction. Properties of AND instruction. So first property is, this we have already discussed, internally and operation takes place. Internally and operation takes place. We will take an example, then it will be clear to you. But I think that it is already clear to you, because this all and or is all we have discussed in digital in details. Internally and operation takes place. Internally and operation takes place. Second, very important. Second, very important. Auxiliary carry flag is set and carry flag is reset. This is very important. Auxiliary carry flag is set and carry flag is reset. After AND operation, status of auxiliary flag will be set and status of carry flag will be reset. Status of rest flag, status of remaining flag, status of remaining flag depends on content of accumulator, depends on content of accumulator, depends on content of accumulator, content of accumulator. Fine. There are some more properties also. There are some more properties also. But first take an example and discuss these three property. First take an example, then discuss these three property. Now let us take an example, that is ANAH. ANAH. Suppose content of accumulator is 55H and content of H resistor is AAH. So now in this we have to convert it into binary. We have to convert it into binary. So 55H is 01010101 and AAH is 10101010. Now if we will perform an AND operation, now if we will perform AND operation, we have already seen this in digital, but again let's see it. For AND operation, 0 0 will be 0, 0 1 will be 0, 1 0 will be 0, 1 1 will be 1. AND operation. This is AND operation. Now see, it will be 0 0 0 0 0 0 0 0. So now this will be my content of accumulator. 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 If I talk about status of flags, if I talk about status, if I talk about status of flags, if I will talk about status of flag, then see, we have already seen that auxiliary carry will be set and carry will be reset. Auxiliary carry will be set, carry will be reset.
put it 0, 0, 0. And now the status of remaining flag depend upon the content of accumulator. So if I talk about the sign flag, D7 bit 0, 0. The content is 0, so 0 flag will be set. Parity flag will also be set. Parity flag will also be set. So this is my content of flag register. This is my content of flag register, which will be, I think, 54H, which will be, I think, 54H. Not I think, it is 54H. It is 54H. It is 54H. So this is how AND operation is performed, and this is how we find the status of flag. This is how we find the status of flag. This is how we find the status of flag. Now coming to remaining properties. Now coming to remaining properties of AND operation. Now suppose we want to reset carry flag, keeping content of accumulator as it is. Then AND operation is used. Suppose we want to reset carry flag. Suppose we want to reset carry flag only, but content of accumulator I want to be same. Then we will use AND operation. So I can write it reset carry flag, reset carry flag without affecting content of accumulator, without affecting content of accumulator, without affecting content of accumulator. It is very important. In objective, these questions may be asked. These questions may be asked. This serial number 2, serial number 4, one more property I will give you. These all are important for your objective exams. So it will reset carry flag without affecting content of accumulator. See, if I take an example, ANA, ANA, A, ANA, A, ANA, A. Suppose content of accumulator is again 55H, 55H. So it will be 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. So again we have to AND it with 55H only, with 55H only. Then see what will be my result. This, it will be same. It will be same. My result is same. My result is same. It is 55H. So after execution of this instruction, content of accumulator will remain the same. Content of accumulator will remain the same. That is 55H only. But now my carry flag is reset. But now my carry flag is reset. So if we want to reset carry flag without affecting content of accumulator, then we will use ANA A operation. Now coming to the last property. If we want to mask any bit, mask any bit of accumulator. If we want to mask any bit of accumulator, then we use AND operation. Then we use AND operation. If we want to mask any bit of accumulator, then we will use AND operation. Now suppose we have the Now suppose content of accumulator is again 55H.
Now suppose content of accumulator is again 55H. So it is 0 1 0 1 0 1 0 1. Now we want to mask this D5 bit. If we want to mask this D5 bit, then what we will do? We will put 1 1 1 here, 1 1 1 1 here, and here we will put 0, and here we will put 0, and then we will perform AND operation. Then we will perform AND operation, and then we will perform AND operation. Then we will perform AND operation. Then see this part. This is D5, D6, D7. This bit we are getting as it is the original one, and D0, D1, D2, D3. This also we are getting as the original one. But this bit, this D4 bit is masked. D4 bit is masked. D4 bit is masked. How it is masked? By putting 0 here. By putting 0 here and performing AND operation. And performing AND operation. That is, if we will perform AND operation, that is AND immediate. What it is? It is ENF. AND immediate EFH, and immediate EFH. And if content of accumulator is 55H, then this D4 bit will get masked. This D4 bit will get masked. So this was all about AND operation. So this was all about AND operations. We have seen different forms of AND operations. We have discussed some examples to see how the flags are affected, and we have seen different properties of AND operation. Now, coming to next logical instruction, that is OR instruction. That is OR instruction, or yes, coming to next logical instruction, that is OR instruction. These all are very easy. These all are very easy. We just need to know some of its properties only. Otherwise, doing AND operation, doing OR operation, this all we have done in details in digital. So here it is just a continuation of it. Very simple. So its different forms are. First is ORA resistor. ORA resistor. Second is ORA memory. Second is ORA memory. Third is ORI 8-bit data. ORI 8-bit data. ORI 8-bit data. Now here again, if I talk about its length, then it is 1 byte. It is 1 byte, just similar to AND operation. Only thing is that there we were doing AND operation. Here we will do OR operation. Other than that, length, machine cycle, opcode will remain the same. 1 byte instruction, 1 byte instruction, 1 machine code. That is opcode fetch, and number of T states is 4T. Now coming to this is also 1 byte instruction, 1 byte instruction, 2 machine cycle, that is opcode fetch and memory read. So 7 T states will be required. It is a 2 byte instruction. 2 machine cycle, opcode fetch and memory read. Number of T states will be 7T. Number of T states will be 7T. Fine. Now coming to the properties. Now coming to properties of OR operation. Now coming to properties of OR operation.
Now coming to properties of OR operation. So first property is internally OR operation take place. This we know very well. Internally OR operation takes place. OR operation takes place between content of accumulator, between content of accumulator and content of resistor, content of resistor, content of memory, and 8-bit data, and 8-bit data, and result is stored in accumulator itself, and result is stored in accumulator itself, and result is stored in accumulator itself, and result is and result is stored, and result is stored in accumulator itself. Fine, this we already know only. Now if we talk about the flags, then auxiliary carry and carry flag both are reset. Auxiliary carry and carry flag both are reset. This is important for OR operation. Auxiliary carry and carry flag both will be reset. Now if I talk about remaining flags, then remaining flags will remaining flags depends on content of accumulator, depends on content of accumulator. Remaining flags depends on content of accumulator. Fine. So let's take an example. And then discuss all these three properties. So if we have an instruction ORA FFH, again let's suppose content of accumulator is 55H. So what we will get? 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Now we will perform OR operation. We know very well that for OR operation 0 0 is 0, 0 1 is 1, 1 0 is 1, 1 1 is 0 1. Fine. So here 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. So FF will be my content of accumulator. FF will be my content of accumulator. Now talking about the sign flag. Now talking about the status of all flags. Now talking about the status of all flags. So for OR operation, auxiliary carry and carry flag will be reset. It will be reset. So put it 0 here. Now remaining flag will depend upon the content of accumulator. So sign flag will be 1 as D7 bit is 1. 0 flag will be reset. Parity flag will be set. So this is my content of flag register. This is my content of flag register. This is my content of flag register. Now coming back to properties of AND instruction. Here I forgot to write one more line with this property. Here I forgot to add one more line with this property, that is reset carry flag.
and set auxiliary carry flag and set auxiliary carry flag without affecting content of accumulator. Without affecting content of accumulator. Reset carry flag and set auxiliary carry flag and set auxiliary carry flag without affecting content of accumulator. Without affecting content of accumulator. Now coming back to properties of OR operation. Now coming back to properties of OR operation. So we have seen three properties. Now coming to next property. Now coming to next property. Next property is if we want to reset both carry flag and auxiliary flag. If we want to reset both carry flag and auxiliary flag, keeping content of accumulator same. 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 Then we will use OR operation. Suppose we perform ORA. Suppose A is again 55H. Suppose A is again 55H. So we will get it something like this. Again 55H. Again 55H. Then see, after performing OR operation, we will get 55H only. But my auxiliary carry and carry flag is reset. So in AND operation also, if we will do AND operation will content of accumulator itself, the result will be same, that is content of accumulator will not change, but my auxiliary carry will be set and carry flag will be reset. And in OR operation, if we will do ORA, then also the content of accumulator will remain the same, but my carry flag and auxiliary carry flag will be reset. So it is important. Property. Now coming to fifth property. It is used to set any bit. Suppose the content of accumulator is 55H only. Suppose content of accumulator is 55H only. Now here also I want to set this D4 bit. Here I want to set this D4 bit. So what I will do? I will put 0 0 0 here, 0 0 0 0 here, and here I will put 1, and here I will put 1. Then this part will remain the same. This D4 bit will be set. This D4 bit will be set. See, here D4 bit is 1 initially only, so that you will not get the feel of this. So suppose let's take an example like this. Fine. This is my content of accumulator. My content of accumulator is EFH. Now I want to reset this D4 bit. Now I want to set this D4 bit. So I will put 1 here and I will put 0 everywhere. So I will put 1 at D4 bit and I will put 0 everyone. So what we will get here? We will get the same thing. And here we will get 1. That is, here initially D4 bit was 0.
but now my D4 bit is 1, is 1. So this is the content of accumulator where my D4 bit is set, has been set by using OR operation, by using OR operation. So this was all about the properties of OR operation. So this was all about the properties and functionalities of OR operation. Now coming to next logical instruction, that is XOR instruction. That is XOR instruction. That is XOR instruction. Now coming to next logical instruction, that is XOR instruction. That is XOR instruction. It is also in three form. It is also in three form: hexarray, register, hexarray, register, hexarray, memory, hexarray, memory, hexarray, 8-bit data, hexarray, 8-bit data, hexarray, 8-bit data. Fine. Here also, if I talk about its length, then it is 1 byte. It is 1 byte. Here, if I will talk about its length, it is also 1 byte. Here, if I will talk about its length, it will be 2 byte. Same as that of AND and OR. If I talk about machine cycle, then here opcode fetch, here opcode fetch, here opcode fetch and memory read, here also opcode fetch and memory read, here also opcode fetch and memory read. Here if I talk about the number of T states, so 40, here 70, here also 70. So same as that of our AND and OR operation. Coming to properties of XOR operation. Coming to properties of XOR operation. Coming to properties of XOR operation. So first property, we all know, we all know, that is XOR operation is performed. XOR operation is performed between content of accumulator, and content of register, memory, or 8-bit data, We all know from digital that for when we will do XOR, then 0 0 is 0, 0 1 is 1, 1 0 is 1, 1 1 is 0. If both the bits are 0, it is 0. If both the bits are same, then it is 0. If both bits are different, then it is 1. So I am not going to take an example. You can do it, you can practice it on your own. Second property, which is an important property, is that auxiliary carry and carry flag is reset, same as that of ORA. Auxiliary carry and carry flag is 0. Now coming to third operation. Now coming to third property, it will reset content of accumulator. It will reset content of accumulator. It will reset content of accumulator. It will reset content of accumulator and also reset carry flag, See,
when we did ANA, when we did ANA, then carry flag was reset. Carry flag was reset, but content of accumulator was not reset. But content of accumulator was not reset. When we did ORA, when we did ORA, then also carry flag was reset. Then also carry flag was reset, but content of accumulator was not reset. But content of accumulator was not reset. In both these cases, in both these cases, we had in both these cases, content of accumulator was same as it was previously. Only difference between these two was in AND operation, auxiliary carry was set, and in ORA operation, auxiliary carry was also reset. But if we will do XOR A, then my carry flag will be reset, and also my content of accumulator will be reset. My carry flag will be reset, and my content of accumulator will also be reset. So this is the significance. Of this instruction. So this is the significance of this instruction. Now see, let's see one another thing, that different instructions by which we can make accumulator, by we can reset accumulator. Different instructions for resetting accumulator. For resetting accumulator. Different instructions for resetting accumulator. First is move immediate A 00H, move immediate A 00H. Second is ANI, second is ANI 00H, second is ANI 00H. Third one is sub A, and fourth one is XOR A. 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 These are different instructions for resetting accumulator. These are different instructions for resetting. These are different instructions for resetting accumulator. So this was all about our AND operation, OR operation, and XOR operation. We have seen in details its different form. We have seen how flags are affected by all these three instructions, and we have also seen different properties of these instructions, which are very important for your objective exams. Now, we will discuss three very important instructions and very small instructions also. Three very important logical instructions and very small instructions. First is CMA, then is CMC, then is STC. So what is CMA? CMA is complement content of accumulator. Complement content of accumulator. Complement content
of accumulator. Accumulator. Now what is CMC? What is CMC? It is complement carry flag. It is complement carry flag. It is complement carry flag. What is STC? It is set carry flag. It is set carry flag. It is set carry flag. Another property of CMA is no flags are affected. No flags are affected. No flags are affected. No flags are affected. This is important. This is important for objective. This is important for objective. That is, no flags are affected. Here, as usual, carry flag will be affected. Carry flag is affected. Carry flag is affected. And here also, carry flag is affected. Here also, carry flag is affected. Carry flag is affected. Now coming to next property of CMA. Coming to next property of CMA. Obviously, it is a 1 byte instruction. It is a 1 byte instruction. One machine code, that is opcode fetch, is required. One machine code, that is opcode fetch, is required. Number of T states are 40. Number of T states are 40. Here also it is 1 byte instruction, because everything is taken inside a microprocessor only. So only one machine cycle is required. Opcode fetch, here also only one machine cycle. Opcode fetch is required, and number of T states are 40. Number of T states are 40. Here also 1 byte instruction. 1 byte instruction. Opcode fetch machine cycle. Opcode fetch machine cycle, and 4 T states. And 4 T states. And 4 T states. Now coming to another property of CMA. Internally, one's complement is executed. Internally, one's complement is executed. Internally, one's complement is executed. That is, to complement content of accumulator, one's complement is done. One's complement is done. One's complement is done. One's complement is done. Here, if content of carry flag is 0, then after execution of this instruction, content of carry flag will become 1. And if content of carry flag is 1, then after execution of this instruction, content of carry flag will become 0. Here, if content of carry flag is 0, then after execution of this instruction, content of carry flag will be set, that is, it will become 1. And if content of carry flag is 1, then after execution of this instruction, its content will remain same, that is 1, because its role is always to set carry flag. Its role is always to set carry flag. Its role is always to set carry flag. So these are some of the properties of these 3 logical instructions. Some of the properties of these 3 logical instructions. Now let's suppose take an example of CMA. Let's suppose take an example of CMA.
So if we have an instruction CMA, and suppose content of accumulator, is FF. So after execution of this instruction, what will be content of accumulator? One's complement has to be done. One's complement has to be done. One's complement has to be done. So now this 0 0. So now this 0 0 is the content of accumulator. 0 0 is the 00H is the content of accumulator. Content of accumulator. One important thing to note is no flags are affected. No flags are affected. No flags are affected. No flags are affected. Now coming to next logical instruction, that is compare instruction. When we were discussing subtraction instruction, then I told you that based on subtraction, we have a logical instruction, that is compare instruction. So now we will see it in details. So it is also in three form: compare resistor, compare compare content of resistor, compare content of memory, compare 8-bit data. Now the question is, with whom we are comparing this resistor content, with whom we are comparing this memory content, with whom we are comparing this 8-bit data. So these are compared. So these are compared with the content of accumulator. So these are compared with the content of accumulator. So now let's see the properties. Now let's see the properties. What is the meaning of compare instruction? It compares it compares content of accumulator. It compares content of accumulator with content of resistor, with content of resistor, memory, or 8-bit data, or 8-bit data, or 8-bit data. Content of accumulator remains unchanged. Content of accumulator remains unchanged after execution of this instruction. Remains unchanged after execution of this instruction. After execution of this instruction of compare instruction. Result is concluded. Result is concluded by status of carry flag and zero flag. Carry flag and zero flag. How? Let's see. How? Let's see. So we will have three conditions. First is if content of accumulator is greater than content of resistor or content of memory or 8-bit data, then in that case, what will be my status of carry flag?
and 0 flag. So see, this we have discussed in a subtraction also, that if content of accumulator is greater than content of register or memory or 8-bit data, it means my final result will be positive. My final result will be positive. And when my final result is positive, then status of carry flag is 0. Because in subtraction for unsigned number, if carry flag is 0, it represents positive result, and if carry flag is negative, if carry flag is 1, and if carry flag is 1, then it represent negative result. Then it represent negative result. So if content of accumulator is greater than this, then my carry flag will be 0. What will be my 0 flag? My 0 flag will be 0. Because my content of accumulator is greater, so obviously it is not going to be, so obviously the result is not going to be 0. So my 0 flag will be 0. Now second, if content of accumulator is less than content of register or memory or 8-bit data or 8-bit data, then in this case my result is going to be negative. So my carry flag will be 1 and my 0 flag, it will again be 0. Because if it is A is less than this, then obviously it is not going to be 0. Now if A is equal to content of register or memory or 8-bit data, if content of accumulator is equal to register, content of register or memory or 8-bit data, in that case, in that case, in that case, carry flag will be 0 because it is not negative. Because if it is equal, then it is obviously not negative. And if it is not negative, then carry flag will be 0. What will be my content of 0 flag? My content of 0 flag will be set. Because A is equal to content of register or memory or 8-bit address, 8-bit data, then obviously my result is going to be 0. Obviously my result is going to be 0. So my content of 0 flag will be 1. So this is how the result is concluded by confirming. So this is how the result is concluded from the status of carry flag and 0 flag, that whether my this content is greater than accumulator or less than accumulator or equal to accumulator. This is very important. This is very important for exam point of view. Direct objective questions are asked from this slide. Direct objective questions are asked from this slide. They will say that content of accumulator is greater than content of register. So what will be my status of carry flag and 0 flag? So now coming to next property. Status of remaining flag. Status of remaining flag is determined by result of subtracting accumulator content of accumulator from content of register or memory or 8-bit data. So from point number 3, we can find the status of carry and 0 flag, but the status of remaining flag. But for the status of remaining flag, we have to perform subtraction operation. We have to perform subtraction operation, and the result which we will get from that, the status of remaining flags can be obtained. So now we can take an example. So now we can, so before that,
we can talk about this. We can talk about its length, machine cycle, and T states. So if I talk about compare register content, then the length is 1 byte, length is 1 byte, machine cycle is 1, that is opcode fetch, and number of t states is 40. Now if I talk about compare memory content, then length is 1 byte, machine cycle is 2, opcode fetch, and a memory read, because we have to read the content of memory and bring it to the microprocessor. Only then it will be compared with accumulator. Now coming to the number of t states. Then 7 t states are required. 4 for opcode fetch and 3 for memory read. Now coming to the next instruction, that is compare 8-bit data. Then its length is 1 byte. Machine cycle is 2. Opcode fetch and memory read. Opcode fetch and memory read. And number of t states are 70. Number of t states are 70. So these are some of the description of all these instructions. Now we can take some examples. So suppose we have an example. Compare B. Where content of accumulator. Suppose content of accumulator is 46. And content of resistor B is 87. So from here we can directly say that A is less than B. So my carry flag will be set, and my zero flag will be 0. Now for finding the status of remaining flag, we have to perform a minus b operation. So what we will get? We will get something like this. 16, 22, 7, 15 means here we will get F. Here 13, 19, 11, B. We will get BFH after subtracting this, and from here we can find the status, of other flags. So we have to convert it into binary. So F will be 1111, and for B we can write 1011. 1011. So what will be the status of sign flag? It is 1. What will be the status of auxiliary carry? We will see. What will be the status of parity flag? It is 0, because 7 times 1. So now coming to auxiliary carry. Now comparing the lower nibble of result, it is F, and the lower nibble of accumulator is 46. Lower nibble of accumulator is 46. So it is greater than this, that is auxiliary carry will be 0. So this is the way compare instruction works. We will be given compare B, or we will be given compare M also. In that case we have to find the memory content from the address location, and that address location is given by the content of HL register pair. Or we will be given 8-bit address, like this. Then that we have to compare with the content of accumulator. From there we can find the status of carry flag and zero flag, and by doing actual subtraction method,
Then the result of the actual subtraction method, and from the result of the actual subtraction, we can find the status of remaining flags. We can find the status of remaining flags. Now, coming to next logical instruction, and that is rotate. Coming to next logical instruction, that is rotate. It is of four types. It is of four types. RLC, RLC, RAL, RAL, RRC, RRC, and the last one is RAR, RAR, RAR. So let's see some of its properties. If I talk about the length, then it is also 1 byte instruction. One machine cycle opcode fetch will be required. One machine cycle opcode fetch is required. And if I talk about the number of t states, then 4 t states are required. So this is first property. If I talk about second property, this instruction is associated only with accumulator. It is associated only with content of accumulator. Associated only with content of accumulator. Only with content of accumulator. It is associated only with content of accumulator. Now the third one is very important. Only carry flag is affected. Only carry flag is affected. Rest no other flags are affected. Only carry flag 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 are affected. Now let's see each one in details. Now first one is RLC. Its description is rotate content of accumulator. Rotate content of accumulator. Rotate content of accumulator 1 bit. 1 bit left. 1 bit left without carry. 1 bit left without carry. Rotate content of accumulator. Rotate content of accumulator 1 bit left without carry. We will see all this with examples. Here I am just writing the statement. Now the second one is RAL. Its description is rotate content of accumulator. Rotate content of accumulator 1 bit left. 1 bit left with carry. Now coming to third one. RRC. Rotate content of accumulator. Rotate content of accumulator 1 bit right.
1 bit write, 1 bit write without carry, without carry. Coming to the last one, RAR, it means rotate content of accumulator, rotate content of accumulator, 1 bit write, 1 bit write with carry, with carry. So these are statements of each instruction. These are statements of each instruction. Now let's take an example. Now let's take an example of each one, and then this statement will be more clear to you. Now let's take an example of each instruction, then these statements will be more clear to you. Now first take in RLC instruction. First take in RLC instruction. Suppose content of suppose content of accumulator, content of accumulator is F1H, and content of carry flag, and content of carry flag is 0. Content of carry flag is 0. Suppose content of accumulator is F1H and content of carry flag is 0. Now if we will perform RLC, now if we will perform RLC, suppose this is the instruction, suppose this is the instruction given in the program RLC. So what is its meaning? Rotate content of accumulator 1 bit left without carry. See how it will work? If we will convert F1H into binary, it will be 1 1 1 1 0 0 0 1, and carry flag is, and carry flag is 0. Carry flag is 0. Or we can write it like this. Carry flag is 0. Carry flag is 0. Carry flag is 0. So its meaning is rotate content of accumulator. Rotate content of accumulator 1 bit left. 1 bit left. All the bit will be shifted towards the left. All the bit will be shifted towards the left hand side, towards the left hand side. That is, 1 will come here, 1 will come here, 0 will come here, this 0 will come here, this 0 will come here, this 1 will come here, this 1 will come here, this 1 will come here. Now where will this 1 go? Where will this 1 go? So it is without carry, shifting towards the left without carry, shifting towards the left, shifting towards the left without carry, without carry. That means this will first move towards this. This will first move towards this. This will first move towards this. And now the content of carry flag, and now content of carry flag will become 1. And now content of carry flag will become 1. And this will be also shifted towards this side. This will be also shifted towards this side. So see, after execution of this instruction, what will be my content of accumulator? What will be my content of accumulator? Content of accumulator will be 1 1 1
0, 0, 0, 1. This one will come this side, 1, 1. What will be the content of carry flag? Content of carry flag will be 1. What will be content of rest flag? Rest flags are not affected. 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 If we convert it into hexadecimal, what it will be? It will be E3H. It will be E3H. It will be E3H. So this is the functioning of RLC. Now let's suppose we take RAL. We will take RAL in which content of accumulator will be shifted 1 bit left with carry. 1 bit left with carry. After this you will get a clear picture that what is the purpose of all this instruction. So let's suppose again content of accumulator. Suppose again content of accumulator is F1H. Content of accumulator is F1H, and content of carry flag, and content of carry flag is suppose again 0. Content of carry flag, suppose it is again 0. Now we have to perform instruction. Now we have to perform instruction RAL. RAL. So first convert this content of accumulator into binary. So it will be 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. And what is the content of carry flag? Content of carry flag is 0. Fine. Now again all the bits will be shifted one place towards the left, one place towards the left, one place towards the left. Now where will this one go? Where will this one go? It will go towards this. It will go towards this. It will go towards this. In this case, the shifting is done one bit towards the left along with carry. That is, this time this one will go towards this. This one will go towards this. And it will change content of carry from 0 to 1. It will change content of carry from 0 to 1. But this time this one will not come this side. This one will not come this side. This time this 0 will come this side. This time this 0 will come towards this side. Because in earlier instruction, the shifting was one bit towards the left without carry. Carry was not shifted here. Carry was not shifted here. But this time carry will be shifted here. Carry will be shifted here. So after execution of this instruction, what will be content of accumulator? It will be 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. This 0 will come this side. This. What will be the content of carry flag? What will be content of carry flag? Content of carry flag will change from 0 to 1. Content of carry flag will change from 0 to 1. Fine. Now let's take third instruction, RRC. RRC. Suppose again content of accumulator is F1H. F1H, and content of carry flag is, suppose this time I will take it as 1. Now the instruction given us to execute is
not us. Instruction given to microprocessor is RRC. RRC. First, convert this into binary. First, convert this into binary 0, 0, 1. What is the content of carry flag? What is the content of carry flag? It is 1. It is 1. Now see, what is the definition? Content of accumulator 1 bit towards right. This time it has to be shifted. This time it has to be shifted 1 bit towards right without carry. Without carry. Then see how the shifting will be done. How the shifting will be done. This bit will come here. This bit will come here. This bit will come towards 1 bit right. This bit will also come towards 1 bit right. It will come here. It will come here. It will come here. Where will this go? It will go here. This instruction is shifting without carry. So now my carry flag will change from 1 to 0. It will change from 1 to 0. And it will also come towards this side. This will also come towards this side. This will also come towards this side. So after execution of this instruction, what will be content of accumulator? So after execution of this instruction, what will be content of accumulator? It will be 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. This one will come this side. What will be the content of carry flag? Content of carry flag will be 0. Content of carry flag will be 0. Content of carry flag will be 0. Fine. Now coming to next instruction. Again suppose content of accumulator is F1H, and content of carry flag, suppose it is 0 this time. Instruction given to us is RAR. These all instructions are only concerned with content of accumulator and not with content of any other than accumulator. So first convert it into binary 1 1 1 1 0 0 0 1. What is the content of carry? Content of carry is 0. Now see, what is the meaning of this instruction? Rotate content of accumulator 1 bit right with carry. This time shifting will be done along with carry. This time shifting will be done along with carry. So this will come here, this will come here, so on. This will come here. This one will go here. Content of carry will change to 1 from 0, and this 0 will come this side. This 0 will come this side. So after execution of this instruction, what is the content of accumulator? It will be 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. What will be the content of carry flag? It will be 1. So this is how rotate instructions work. This is how rotate instructions work. चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आते हैं, दैट इज पुश एंड पॉप. तो पुश एंड पॉप इज बेसिकली अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. इट इज अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. इट इज अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. ठीक है, पहले पुष्प को देखते हैं. तो पुष्प का जो
पुश इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है वो क्या है? वो है आपका पुश रजिस्टर पेयर। पुश रजिस्टर पेयर। ठीक है। अब ये रजिस्टर पेयर क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं पुश बी। बी का मतलब बीसी रजिस्टर पेयर, सिर्फ बी नहीं है, बीसी रजिस्टर पेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पुश रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर मेरा क्या होता है? 16 बिट का होता है। रजिस्टर पेयर मेरा 16 बिट का होता है। तो यहाँ पे जो पुश बी है, सिर्फ बी नहीं होगा, लिखते बी है लेकिन इसको आपको लेके चलना पड़ेगा पुश बीसी रजिस्टर पेयर। दूसरा हो जाएगा पुश डी रजिस्टर पेयर। तीसरा हो जाएगा पुश एच एल रजिस्टर पेयर। चौथा हो जाएगा पुश पी एस डब्ल्यू। पी एस डब्ल्यू क्या है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। पी एस डब्ल्यू क्या होता है? आपको आई थिंक आपको पता ही होगा वैसे। पी एस डब्ल्यू होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ये स्टोर करता है कंटेंट ऑफ अकुमुलेटर एंड कंटेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर। ये स्टोर करता है कंटेंट ऑफ अकुमुलेटर एंड कंटेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर। कंटेंट ऑफ अकुमुलेटर हायर ऑर्डर होता है और कंटेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर में लोअर ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये कुछ तरह के फॉर्म्स है, फॉर्म ऑफ पी पुश रजिस्टर, फॉर्म्स ऑफ पुश रजिस्टर। ठीक है, पुश रजिस्टर जो है ये मेरा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ये मेरा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसमें 3 मशीन साइकिल यूज होते हैं। इसमें 3 मशीन साइकिल यूज होते हैं। इसमें 12 टी स्टेट्स है। इसमें 12 टी स्टेट्स है। ठीक है, अब चलो इसे हम लोग समझते हैं। तो पुश एंड पॉप जो है, मेरे पुश एंड पॉप जो रजिस्टर्स है, ये मेरे स्टैक मेमोरी, ये मेरे स्टैक मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। ये मेरे स्टैक मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं? पुश रजिस्टर पेयर का मतलब ये है कि रजिस्टर पेयर का जो वैल्यू है, इसे हम लोग स्टैक मेमोरी में राइट करते हैं। इसे हम लोग स्टैक मेमोरी में राइट करते हैं। इसी तरह जो मेरा पॉप रजिस्टर पेयर है, उसका मतलब है कि हम लोग स्टैक मेमोरी से हम लोग स्टैक मेमोरी से डेटा फेच करेंगे और हम लोग अपने रजिस्टर पेयर में उसे अपलोड करेंगे। ठीक है, बेसिकली पुश का मतलब क्या है? देखो, पुश का मतलब क्या है? पुश रजिस्टर पेयर, इसे अगर हम लोग लिटरेचर में लिखना चाहे तो ये हम लोग लिखेंगे this instruction write content of register pair into stack memory। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग पॉप रजिस्टर पेयर ले, पॉप रजिस्टर पेयर ले, तो ये हो जाएगा this instruction read content of stack memory into register pair। It reads content
ऑफ स्टैक मेमोरी इनटू रजिस्टर पेयर। ठीक है, पुश पॉप बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा है। तो अब चलो, अब हम लोग इसको समझते हैं। मान लो हम लोगों का इंस्ट्रक्शन है, मान लो हम लोगों का इंस्ट्रक्शन है पुश पुश बी, पुश बी। ठीक है, मान लो आपका इंस्ट्रक्शन है पुश बी। ठीक है, ये आपका स्टैक मेमोरी है, ये आपका स्टैक मेमोरी है। स्टैक मेमोरी को मान लो हम लोग इनिशियलाइज कर दिए हैं 4000 एच में। ठीक है, मान लो बीसी का जो कंटेंट है, बीसी का जो कंटेंट है वो है 2050 एच। ठीक है, बीसी का कंटेंट है मेरा 2050 एच। ठीक है, हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं पुश बी। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि मेरा जो रजिस्टर पेयर है बीसी, उसका जो कंटेंट है उसे हम लोग स्टैक मेमोरी में राइट करेंगे, उसे हम लोग स्टैक मेमोरी में राइट करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो मेरा मशीन साइकिल है, सबसे पहला जो मेरा मशीन साइकिल है, सबसे पहला मशीन साइकिल है ऑपकोड फेच। ठीक है, तो पहले मशीन साइकिल से क्या होगा, हम लोग ऑपकोड फेच करेंगे। ऑपकोड फेच करते ही हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों को जो रजिस्टर पेयर है उसके वैल्यू को स्टैक मेमोरी में अपलोड करना है या राइट करना है। तो मेरा सेकंड मशीन साइकिल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेमोरी राइट, ये हो जाएगा मेमोरी राइट। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो मेरा मशीन साइकिल है वो है मेमोरी राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मेरा जो हायर ऑर्डर है, मेरा जो रजिस्टर पेयर है, रजिस्टर पेयर है उसका जो हायर ऑर्डर बाइट है 20h, उसे उसे हम लोग स्टैक मेमोरी में राइट कर देंगे। ठीक है, अब मेरा जो तीसरा मशीन साइकिल है, अब जो मेरा तीसरा मशीन साइकिल है वो फिर से हो जाएगा मेमोरी राइट। इसमें क्या है कि मेरा जो लोअर ऑर्डर बाइट है बीसी रजिस्टर का, बीसी रजिस्टर का जो लोअर ऑर्डर बाइट है 50h, उसे हम लोग स्टैक मेमोरी में अपलोड कर देंगे, उसे हम लोग स्टैक मेमोरी में, उसे हम लोग स्टैक मेमोरी में अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब आप बताओ, देखो जनरली इसमें ना क्वेश्चन क्या बनता है, जनरली आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, आपको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, आपको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि आपका जो स्टैक पॉइंटर का जो वैल्यू है वो 4000h है। अब आपको बोला जाएगा कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आपका स्टैक पॉइंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पुश के वजह से मेरा जो रजिस्टर पेयर है उसका जो कंटेंट है 16 बिट जो कंटेंट है वो हम लोग स्टैक मेमोरी में डाले, इसके वजह से मेरा स्टैक पॉइंटर 2 टाइम डिक्रीमेंट हो जाएगा, 2 टाइम डिक्रीमेंट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन होगा, इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन होगा और जो मेरा स्टैक पॉइंटर है वो 2 टाइम डिक्रीमेंट हो जाएगा, वो 2 टाइम डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ पुश इंस्ट्रक्शन content of stack pointer gets decreased by 2 और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो बहुत ही इजी इंस्ट्रक्शन है, बहुत ही इजी इंस्ट्रक्शन है। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टी स्टेट्स ना, पुश के केस में नंबर ऑफ टी स्टेट्स 12 होते हैं,
क्योंकि यहाँ पे जो ऑपकोड फैच है ना, ये 6 टी स्टेट्स लेगा, मेमोरी राइट 3 टी स्टेट्स लेगा, मेमोरी राइट 3 टी स्टेट्स लेगा। मीन्स पहला मशीन साइकिल 6 टी स्टेट्स ले रहा है, बाकी दो मशीन साइकिल 3 टी स्टेट्स ईच ले रहा है। इसलिए जो टोटल टी स्टेट्स है वो 12 टी स्टेट्स है। इसलिए जो टोटल टी स्टेट्स है वो 12 टी स्टेट्स है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब चलो हम लोग अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आते हैं, पॉप इंस्ट्रक्शन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आते हैं, पॉप इंस्ट्रक्शन। ये भी हो गया पॉप रजिस्टर पेयर। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से कर लो बी, यहाँ पे आप फिर से कर लो बी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। मान लो आपके पास एक स्टैक पॉइंटर, मान लो आपके पास एक ये स्टैक पॉइंटर, ये हो गया 4000H 3FFH 3FFE 3FFD। H 50H, ये है मेरा स्टैक मेमोरी। अब मान लो आपने ये इंस्ट्रक्शन यूज किया, तो ये जो पॉप है ये भी मेरा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, ये मेरा पुश के लिए है, ये मेरा पुश के लिए है। तो अगर हम लोग पॉप के बारे में बात करें तो पॉप भी मेरा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 3 मशीन साइकिल है एंड 10 टी स्टेट्स है, 10 टी स्टेट्स है। तो इसमें देखो क्या होगा, पहला जो मेरा मशीन साइकिल है, पहला जो मेरा मशीन साइकिल है वो होगा ऑपकोड फेच। ऑपकोड फेच करते ही हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग के पास पॉप रजिस्टर पेयर है। इट मीन्स कि हम लोगों को स्टैक मेमोरी पे जाना है, स्टैक मेमोरी पे जाना है, वहां पे हम लोगों को डेटा पिक करना है और हम लोगों को अपने रजिस्टर पेयर बीसी पे उसे अपलोड करना है। ठीक है, तो अब जो सेकेंड मशीन साइकिल है वो क्या हो जाएगा, मेमोरी रीड। मेमोरी रीड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो 50H है ये फैच हो जाएगा, ये जो मेरा 50H है, ये जो मेरा 50H है ये फैच हो जाएगा, ये मेरा फैच हो जाएगा और ये मेरे C पे आ जाएगा, ये मेरा जो रजिस्टर है C इस पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा मेरा तीसरा मशीन साइकिल, फिर से हम मेमोरी रीड करेंगे। इस बार मेमोरी रीड करके हम लोग 20H को फैच कर लेंगे और ये मेरा बी पे आ जाएगा, रजिस्टर बी पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्टैक मेमोरी के कंटेंट को फैच कर लिए और रजिस्टर पेयर में उसे अपलोड कर लिए। यहाँ पे देखो क्या है, नंबर ऑफ, अगर टी स्टेट्स का बात करें तो यहाँ पे 10 है, क्योंकि ऑपकोड फैच के लिए मेरा यहाँ पे 4 टी स्टेट्स यूज कर रहे हैं। पुश में मेरा 6 टी स्टेट्स था, लेकिन यहाँ पे मेरा 4 टी स्टेट्स है, बाकी तो ये 3T है, इसलिए मेरा ये 10 टी स्टेट्स हो गया। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा वो ये देगा कि आपको ये इंस्ट्रक्शन दे देगा। ठीक है, आपको बोल देगा कि आपका स्टैक पॉइंटर का वैल्यू 3FFEH है। ठीक है, अब आपको बोला जाएगा कि आप बताओ पॉप इंस्ट्रक्शन के बाद आपका स्टैक पॉइंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉप के बाद क्या है कि स्टैक पॉइंटर का वैल्यू मेरा 2 टाइम इंक्रीमेंट हो जाता है, तो मेरा 4000H हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, आफ्टर एग्जीक्यूशन of pop instruction stack pointer gets increased by 2। तो पुश में क्या हो रहा था, डिक्रीज बाय 2 हो रहा था, पॉप में क्या हो रहा था, इंक्रीज बाय 2 हो रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है और आई होप कि आपको ये पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन समझ में आया।
Now, coming to next logical instruction, that is call and return. Call and return are two separate instructions, but we will study it together. कॉल एंड रिटर्न का फंक्शन क्या है ये समझते हैं। कॉल एंड रिटर्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और आप भी काफ़ी ध्यान से इसको समझना। तो अब समझते हैं कि कॉल एंड रिटर्न का फंक्शन क्या है। मान लो आपके पास एक मेन प्रोग्राम है, ठीक है, आपके पास एक मेन प्रोग्राम है और दूसरा आपके पास एक सब रूटीन प्रोग्राम है। सब रूटीन प्रोग्राम, सब रूटीन प्रोग्राम को आप अदर देन मेन प्रोग्राम भी समझ सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक मेन प्रोग्राम है और दूसरा आपके पास एक सब रूटीन प्रोग्राम है। अब ये कॉल एंड रिटर्न क्या करता है, ये हमें फैसिलिटेट करता है टू मूव फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम और टू मूव फ्रॉम सब रूटीन प्रोग्राम टू मेन प्रोग्राम। कॉल एंड रिटर्न का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये हम लोगों को फैसिलिटेट करेगा टू मूव फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम और फ्रॉम सब रूटीन प्रोग्राम टू मेन प्रोग्राम। तो ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक तरह से मोटा मोटा एक जिस्ट है फॉर द कॉल एंड रिटर्न फंक्शन। अब ये किस तरह से फैसिलिटेट करेगा अवर मूवमेंट फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम और फ्रॉम सब रूटीन प्रोग्राम टू मेन प्रोग्राम, ये हम लोग आगे समझते हैं। अब चलो हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग इस टेबल को थोड़ा समझते हैं। इस टेबल से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉल का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हो सकता है। What can be different forms of call instructions? तो पहला है, कॉल का जो ऑपकोड है वो CALL है, CALL है, ठीक है। अगर हम लोग ऑपरेंड का बात करें तो ये है 16 बिट एड्रेस, ये है 16 बिट एड्रेस। लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन का बात करें तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, नंबर ऑफ मशीन साइकिल 5 है, नंबर ऑफ टी स्टेट्स 18 है। देखो यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि ये वाला जो मेरा इंस्ट्रक्शन है कॉल 16 बिट एड्रेस, ये एक तरह से अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन है। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन है। अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि अगर आपने अपना अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन यूज किया है, अगर आपने अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन यूज किया है, तो आपका प्रोग्राम फ्रॉम मेन मेमोरी टू फ्रॉम मेन तो आपका प्रोग्राम फ्रॉम मेन मेमोरी फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम स्विच करेगा ही करेगा, स्विच करेगा ही करेगा, और कोई दो राय है ही नहीं। अगर आपने अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया है तो मूवमेंट फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम होकर ही रहेगा, ठीक है। इसके नीचे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके नीचे जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, इसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल, इसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन, इसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल, इसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि अगर आपने कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन यूज किया है तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार देयर विल बी ट्रांजिशन फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम। अगर आपने
कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन यूज किया है, अगर आपने कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन यूज किया है तो आपका कंडीशंस मीट होना चाहिए, आपके कुछ डिजायर्ड कंडीशंस मीट होने चाहिए। जब आपके वो डिजायर्ड कंडीशंस मीट होंगे तो ही आपका जो प्रोग्राम है इट विल मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम। तो अब देखते हैं कि वो सब कौन कौन से कंडीशंस है जो मीट होने चाहिए। तो अगर हम लोग सीसी यूज किए हैं, मान लो अगर हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन सीसी यूज किए हैं, अगर हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन सीसी यूज किए हैं तो इसमें क्या होगा कि मेरा प्रोग्राम एक ट्रांजिशन लेगा, मेरा प्रोग्राम ट्रांजिशन लेगा फ्रॉम मेन मेमोरी टू फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम only when carry flag is 1, only when carry flag is 1, only when carry flag is 1। इट मीन्स कि मान लो आपने ये इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया, आपने ये इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया cc 16 बिट एड्रेस, cc 16 बिट एड्रेस, आपने ये इंस्ट्रक्शन यूज किया। तो ये अगर आपने ये कॉल इंस्ट्रक्शन यूज किया है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम। यू विल गेट ए ट्रांजिशन फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम ओनली व्हेन ए कंडीशन इज मेट। एंड वो कंडीशन क्या है कि अगर आपका कैरी फ्लैग 1 है, अगर आपका कैरी फ्लैग अगर आपका कैरी फ्लैग 1 है, अगर आपका कैरी फ्लैग 1 है, तभी आपको एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम इफ यू हैव यूज्ड cc 16 बिट एड्रेस और कॉल 16 बिट एड्रेस इन योर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक तरह से मेरा कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन है। इस तरह से सीएनसी क्या है, यहाँ पे कंडीशन मीट होना चाहिए, कैरी फ्लैग मेरा 0 होना चाहिए, यहाँ पे पैरिटी फ्लैग 1 होना चाहिए, यहाँ पे पैरिटी फ्लैग 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 फ्लैग 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 फ्लैग 0 होना चाहिए, यहाँ पे साइन फ्लैग, यहाँ पे साइन फ्लैग 1 होना चाहिए और यहाँ पे साइन फ्लैग 0 होना चाहिए। तो पहला चीज जो हम लोगों ने यहाँ ध्यान दिया है वो ये है कि जो मेरे कॉल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कंडीशनल अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन जिसे अगर आपने यूज किया है तो मेरा ट्रांजिशन होकर ही रहेगा, मेरा ट्रांजिशन होकर ही रहेगा फ्रॉम मेन मेमोरी टू from main program to subroutine program। और फिर हम लोगों ने कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस भी देखा है, फिर हम लोगों ने कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस भी देखा है और यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि मेरा जो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम वो हर एक केस में नहीं होगा, वो तभी होगा जब मेरे कुछ कंडीशंस मीट हो रहे होंगे, वो तभी होगा जब मेरे कुछ कंडीशंस मीट हो रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मशीन साइकिल और टी स्टेट्स के। तो अगर हम लोगों ने अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन यूज किया है, अनकंडीशनल, अगर हम लोगों ने अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन यूज किया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, मान लो आपने ये इंस्ट्रक्शन यूज किया, कॉल 16 बिट एड्रेस, कॉल 16 बिट एड्रेस, फॉर एग्जांपल आपने ये यूज किया
कॉल 8050H। तो इस केस में मेरे जो मशीन साइकिल्स है वो कौन कौन से रहेंगे? मेरे मशीन साइकिल रहेंगे, पहला हो गया ऑपकोड फेच, पहला हो गया ऑपकोड फेच, दूसरा हो गया मेमोरी रीड, तीसरा हो गया मेमोरी राइट। अभी हम लोग देखेंगे ये सब सारे जो जितने भी मशीन साइकिल्स है ये सब अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे किस तरह से फंक्शन हो रहा है, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। फिर सॉरी ये हो गया, फिर से आएगा मेरा मेमोरी रीड, फिर से आएगा मेरा मेमोरी रीड। ये जो दो मेमोरी रीड है इससे हम लोग अपने 16 बिट एड्रेस को इससे हम लोग अपने 16 बिट एड्रेस को रीड कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया मेमोरी राइट, फिर आ गया मेमोरी राइट, फिर आ गया मेमोरी राइट, ठीक है। तो ये मेरे 5 मशीन साइकिल्स हैं। अब अगर हम लोग टी स्टेट्स का बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान देना, कॉल इंस्ट्रक्शंस के लिए जो ऑपकोड फेच है वहाँ पे हम लोग 6 टी स्टेट्स लेते हैं, वहाँ पे हम लोग 6 टी स्टेट्स लेते हैं। फिर मेमोरी रीड में 3 टी स्टेट्स, मेमोरी रीड में फिर से 3 स्टेट्स, मेमोरी राइट में 3 टी स्टेट्स, मेमोरी राइट में 3 टी स्टेट्स, 6 3 9 12 15 18। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही लिखा है कि अगर हम लोग अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो ये मेरा 5 मशीन साइकिल है, 5 मशीन साइकिल लेगा और 18 टी स्टेट्स लेगा, 18 टी स्टेट्स लेगा। अब ये 3 बाइट कैसे हो रहा है? 3 बाइट अभी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखो 2001H है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से होगा 2001H, ऑप कोड है, यहाँ पे ऑप कोड है, ठीक है। उसके बाद हो गया 2002H, जो मेरा 16 बिट एड्रेस का जो लोअर बिट्स है उसे हम लोग रीड करेंगे। उसके बाद 2003 में हम लोग हायर ऑर्डर एड्रेस को हम लोग रीड करेंगे, हायर ऑर्डर एड्रेस को हम लोग रीड करेंगे। तो इस तरह से मेरे ये जो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो 3 बाइट हो जाता है। मेरा जो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मेरा जो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो 3 बाइट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि जो अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन है ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल, अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन में हम लोग अपने कैरी फ्लैग वाले कॉल इंस्ट्रक्शंस को ही ले लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा सीसी, ये हो गया मेरा सीसी 16 बिट एड्रेस, सीसी 16 बिट एड्रेस, ठीक है। ये भी अपना 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये भी अपना 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अगर हम लोग मशीन साइकिल का बात करें तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा, ऑपकोड फेच, ऑपकोड फेच,
मेमोरी रीड, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, मेमोरी राइट। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम लोग टी स्टेट्स का बात करें तो ये हो गए मेरे 18 टी स्टेट्स, ये हो गए मेरे 18 टी स्टेट्स। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस। ये हम लोग बात कर रहे हैं फॉर कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस, और वो भी कब, जब मेरा कंडीशन मीट हो जाता है, जब मेरा कंडीशन मीट हो जाता है और मेरा प्रोग्राम एक ट्रांजिशन लेगा फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम। लेकिन अगर हम लोग अपने टेबल में देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्लैश स्लैश करके लिखा है। ये स्लैश का मतलब क्या है? देखो, ये स्लैश के बाद में जो हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे 5 आ गया, स्लैश के बाद जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 18 आ गया। ये बेसिकली क्या है कि कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस है जब आपका कंडीशन मीट हो जा रहा है। अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिखा, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिखा, या यहाँ पे हम लोगों ने जो 9 लिखा, ये क्या है? ये मेरा कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन है जब मेरा कंडीशन मीट नहीं हो रहा है, जब मेरा कंडीशन मीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन यूज किया है और मेरा कंडीशन मीट नहीं हो रहा है, तो उस केस में मेरा जो मशीन साइकिल है वो 2 है। उस केस में मेरा जो मशीन साइकिल है वो 2 है, और जो मेरा नंबर ऑफ टी स्टेट्स है वो 9 है। ठीक है, तो ये समझ लो, यही मेरा कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं व्हेन कंडीशंस आर, व्हेन कंडीशंस आर मेट। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन कब? When conditions are not met, when conditions are not met। ठीक है, उस केस में मेरे मशीन साइकिल्स क्या होंगे? उस केस में मेरे मशीन साइकिल होंगे ऑपकोड फेच, उस केस में मेरे मशीन साइकिल होंगे ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड, और मेमोरी रीड। यहाँ पे ऑपकोड फेच 6 टी स्टेट्स ले रहा है, मेमोरी रीड 3 टी स्टेट्स ले रहा है, इसलिए मेरा जो टोटल टी स्टेट्स है वो मेरा 9 है। टोटल टी स्टेट्स 9 है, मशीन साइकिल 2 है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि सबसे पहले आपने ऑपकोड फेच किया, फिर आपने मेमोरी रीड करके अपना जो लोअर एड्रेस है, अपना जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है, लोअर ऑर्डर एड्रेस है, वो हम लोगों ने रीड किया। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आ जाता है कि मेरा जो कंडीशंस है, मेरा जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो मीट नहीं हो रहा है। तो अगर मेरा रिक्वायर्ड कंडीशंस मीट नहीं हो रहा है तो वो कॉल इंस्ट्रक्शन को वहीं पे टर्मिनेट कर देता है, वो उसे और आगे नहीं लेकर जाता है, वो उसे वहीं टर्मिनेट कर देता है, वो उसे और आगे नहीं लेकर जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास सिर्फ 2 मशीन साइकिल है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से कॉल इंस्ट्रक्शन मीट हो तब तो फिर 5 मशीन साइकिल लगता है। लेकिन जब मेरा कंडीशंस मीट नहीं हो रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर कॉल इंस्ट्रक्शंस को टर्मिनेट कर देता है। उस केस में मेरे 2 मशीन साइकिल यूज हो रहे हैं, उस केस में मेरे 2 मशीन साइकिल यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टेबल समझ में आया, आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शंस जो देखने मिलेगा वो आपको समझ में आया। बेसिकली यहाँ पे जो मेन बाइफर्केशन है वो है बिटवीन अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं। अब चलो हम लोग अपने रिटर्न इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो जिस तरह हम लोगों ने कॉल इंस्ट्रक्शन का एक टेबल बनाया था, इस तरह हम लोगों ने रिटर्न इंस्ट्रक्शन का भी एक टेबल बना लिया है। तो अब चलो इसे देखते हैं।
सबसे पहला जो है वो मेरा अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन है। अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं बाय RET। ठीक है, ये मेरा अनकंडीशनल 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 रिटर्न इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे अगर हम लोग ऑपरेंड का बात करें तो ये नन है। यहाँ पे आप थोड़ा सा हैरान होंगे। मीन्स देखो, अगर आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, अगर आप अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो तो आप बस इतना लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑपरेंड नहीं है, यहाँ पे कोई एड्रेस वैड्रेस नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर सिर्फ RET लिख दिए, कोई ऑपरेंड है नहीं, तो मूवमेंट होगा कैसे, कौन कहाँ जाएगा, कैसे समझ में आएगा? तो ये चीज अभी हम लोग देखेंगे। अभी जब हम लोग प्रॉपर वर्किंग ऑफ कॉल एंड रिटर्न देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि रिटर्न के लिए ऑपरेंड का जरूरत ही नहीं है, रिटर्न के लिए ऑपरेंड का जरूरत ही नहीं है। ये अभी हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर हम लोग बाइट्स का बात करें तो ये मेरा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है क्योंकि कोई ऑपरेंड तो है ही नहीं, सिर्फ हमें रिटर्न का ऑपकोड फेच करना है। ठीक है, रिटर्न का ऑपकोड फेच करना है, तो 1 बाइट हो गया। मशीन साइकिल का बात करें तो ये मेरा 3 मशीन साइकिल है, T स्टेट्स 4 है। मशीन साइकिल क्या क्या होंगे? मशीन साइकिल होंगे मेरे ऑपकोड फेच, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड। ये होंगे मेरे 3 मशीन साइकिल। और नंबर ऑफ T स्टेट्स का बात करें तो ये हो गया 4T, ये हो गया 3T, ये हो गया 3T। तो मशीन साइकिल 3 है, मशीन साइकिल 3 है, नंबर ऑफ T स्टेट्स 10 है। ठीक है, अब ये नीचे जितने भी रिटर्न के इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे मेरे कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे मेरे कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस हैं। अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन का मतलब ये था कि आपका स्विच इन होगा फ्रॉम सब रूटीन प्रोग्राम टू मेन प्रोग्राम इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशंस। बट अगर हम लोग कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन का बात करें, अगर हम लोग कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन का बात करें, तो यहाँ पे आपका स्विच इन होगा फ्रॉम सब रूटीन प्रोग्राम टू मेन प्रोग्राम ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट, only when certain conditions are met, only when certain conditions are met, only when certain conditions are met। तो ये जो RC है ये बता रहा है मेरा कैरी फ्लैग अगर 1 होगा तो मेरा ट्रांजिशन होगा फ्रॉम सब रूटीन टू मेन प्रोग्राम। यहाँ पे कैरी फ्लैग 0 होना चाहिए, यहाँ पे पैरिटी 1 होना चाहिए, यहाँ पैरिटी 0 होना चाहिए, यहाँ 0 फ्लैग 1 होना चाहिए, यहाँ 0 फ्लैग 0 होना चाहिए, यहाँ पे मेरा साइन फ्लैग 1 होना चाहिए, यहाँ पे मेरा साइन फ्लैग 0 होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस मीट हो रहे हैं तभी जाके मेरे ट्रांजिशंस होंगे फ्रॉम सब रूटीन प्रोग्राम टू मेन प्रोग्राम। तो अगर हम लोग कंडीशनल रिटर्न का बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके 2 कंडीशंस बनेंगे, 1/3, 6/12। तो हम लोग पहले बात करते हैं, हम लोग पहले बात करते हैं कंडीशनल रिटर्न है, कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन है। हम लोग बात कर रहे हैं when conditions are met, when conditions are met। उस केस में मेरे मशीन साइकिल क्या होंगे? ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड। नंबर ऑफ T स्टेट्स क्या है? नंबर ऑफ T स्टेट्स यहाँ पे होंगे 60, यहाँ पे 3T, यहाँ पे 3T। ये चीज आप ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे टेबल देखोगे, यहाँ पे जो मेरा अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ T स्टेट्स 10 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कंडीशनल रिटर्न का बात करें और मेरे कंडीशंस मीट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ T स्टेट्स 12 है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है
कि कंडीशनल रिटर्न है, कंडीशंस मीट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितने हैं, अनकंडीशनल रिटर्न है तो नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितने हैं। बेसिकली देखो डिफरेंस यहाँ पे कैसे बन रहा है कि जब मेरा अनकंडीशनल रिटर्न का बात करें, ये मेरा अनकंडीशनल रिटर्न है, ये मेरा अनकंडीशनल रिटर्न है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑपकोड फैच का बात करें तो यहाँ पे मेरे 4 टी स्टेट्स लग रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कंडीशनल रिटर्न का बात करें और कंडीशंस मीट हो रहे हैं तो मेरे ऑपकोड फैच में 6 टी स्टेट्स है। तो इसी की वजह से यहाँ पे 2 टी स्टेट्स का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे 10 मिला, यहाँ पे 12 मिला, यहाँ पे 10 मिला, यहाँ पे 12 मिला। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल, अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल रिटर्न instructions when conditions not met, when conditions not met, उस केस में मेरा सिर्फ एक मशीन साइकिल होगा, दैट इज ऑपकोड फैच, और उस केस में मेरा जो नंबर ऑफ टी स्टेट्स है वो 60 होगा, वो 60 होगा। मीन्स यहाँ पे आप इस तरह से याद कर सकते हो कि अगर मेरा कंडीशनल रिटर्न है, अगर मेरा कंडीशनल रिटर्न है, इररेस्पेक्टिव के कंडीशन मीट हो रहे हैं कि मीट नहीं हो रहे हैं, मेरे जो टी स्टेट्स होंगे फॉर ऑपकोड फैच वो 6 होगा। लेकिन अगर अनकंडीशनल है तो उस केस में ऑपकोड फैच का टी स्टेट्स 4 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉल इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन का एक स्लाइट ओवरव्यू समझ में आया है, इसका डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन समझ में आया है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन समझ में आया है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका प्रॉपर वर्किंग में, ये एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से मेरा ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम और फ्रॉम सब रूटीन प्रोग्राम टू मेन प्रोग्राम, ये हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलो, अब कॉल एंड रिटर्न काम कैसे करता है इसे देखते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग एक मेन प्रोग्राम लिखते हैं। टू थाउजेंड एच, 2000 H है। ठीक है, अभी हम लोग एक मेन प्रोग्राम लिख रहे हैं, MVI A,29H। ठीक है,
ठीक है, ये हम लोग का एक मेन प्रोग्राम है। अब इसी के साथ हम लोग एक सब रूटीन प्रोग्राम भी लिख लेते हैं। इसी के साथ हम लोग एक सब रूटीन प्रोग्राम भी लिखते हैं। मान लो ये प्रोग्राम चलता आ रहा है, ठीक है, बीच का स्किप करते हैं और फिर आपका आ रहा है ठीक है। अब देखो, ये हम लोगों का मेन प्रोग्राम हो गया, ठीक है, ये हम लोगों का सब रूटीन प्रोग्राम हो गया। अब हम लोगों ने ये देखा था कि कॉल एंड रिटर्न का फंक्शनैलिटी क्या है। कॉल का फंक्शनैलिटी है कि वो आपको मेन प्रोग्राम से, कॉल का फंक्शनैलिटी है, कॉल का फंक्शनैलिटी है कि वो आपको मेन प्रोग्राम से सब रूटीन प्रोग्राम पे लेकर जाएगा। वो आपको मेन प्रोग्राम से सब रूटीन प्रोग्राम पे लेकर जाएगा। और रिटर्न का फंक्शनैलिटी है, और रिटर्न का फंक्शनैलिटी है कि वो आपको सब रूटीन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम पे लेकर आएगा। रिटर्न आपको सब रूटीन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम पे लेकर आएगा। अब ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम एंड सब रूटीन प्रोग्राम टू मेन प्रोग्राम, ये किस तरह से हो रहा है इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले क्या है, मूव इमीडिएट A,29H, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए के अंदर मेरा 29H आ जाएगा। ए के अंदर मेरा 29H आ जाएगा। अब आ रहा है लोड इमीडिएट स्टैक पॉइंटर 4000H। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो स्टैक पॉइंटर है, इसका मतलब है मेरा जो स्टैक पॉइंटर है उसे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं भाई 4000H। उसे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं बाई 4000H, ठीक है। फिर क्या आ गया, मूव B,A। इसका मतलब हो गया B में आ जाएगा 29H, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब यहाँ पे 2006H पे, 2006H पे मेरा कॉल इंस्ट्रक्शन आ रहा है। यहाँ पे मेरा 2006H पे मेरा कॉल इंस्ट्रक्शन आ रहा है। कॉल इंस्ट्रक्शन अलोंग विद ए 16 बिट एड्रेस जो कि है 3050H, जो कि है 3050H, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस इंस्ट्रक्शन से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेरा ट्रांजिशन होगा फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम, और हम लोग मेन प्रोग्राम से मूव कर जाएंगे और हम लोग सब रूटीन प्रोग्राम पे आ जाएंगे। और हम लोग आ कहाँ पे जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे 3050H पे, हम लोग आ जाएंगे 3050H पे, ठीक है। अब ये मूवमेंट कैसे हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। अब ये जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग इस वाले इंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं, इस वाले इंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं। ये हो गया 2006H, 2006
6H कॉल 3050H 3050H। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा। सबसे पहले तो ऑपकोड फैच होगा, सबसे पहले ऑपकोड फैच होगा। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा पहला मशीन साइकिल है, जो पहला मेरा मशीन साइकिल है वो करेगा ऑपकोड फैच। ठीक है, ऑपकोड फैच करने के बाद ये हमें समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को मेन प्रोग्राम से सब रूटीन प्रोग्राम में मूव करना है। और जहाँ पे और सब रूटीन प्रोग्राम में हमें कहाँ पे जाना है, हमें 3050H पे जाना है। ठीक है, तो पहला जो मेरा मशीन साइकिल है, पहला जो मेरा मशीन साइकिल है, ये हो गया मशीन साइकिल 1, ये हो गया ऑपकोड फैच। अब मशीन साइकिल 2, मशीन साइकिल्स 2 में हम लोग करेंगे मेमोरी रीड। ठीक है, मेमोरी रीड करके क्या होगा, मेमोरी रीड करके हम लोग जो लोअर एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस बाइट है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बाइट है 50H, लोअर ऑर्डर एड्रेस बाइट है 50H, इसे हम लोग मेमोरी से रीड करेंगे, इसे हम लोग मेमोरी से रीड करेंगे और इसे हम लोग स्टोर करेंगे टेम्पोरी इंस्ट्रक्शंस में, और इसे हम लोग स्टोर करेंगे टेम्पोरी इंस्ट्रक्शंस पे। और चलो यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ से हम इसे रीड किए 50H, लोअर ऑर्डर एड्रेस बाइट को हम फेच कर लिए फ्रॉम मेमोरी, ये हो गया 50H। अब मेरा जो तीसरा मशीन साइकिल है, ये जो मेरा तीसरा मशीन साइकिल है, ये भी आ जाएगा मेमोरी रीड, ये भी आ जाएगा मेमोरी रीड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हायर ऑर्डर एड्रेस बाइट है, जो हायर ऑर्डर एड्रेस बाइट है, जो हायर ऑर्डर एड्रेस बाइट है, उसे हम लोग रीड करेंगे, उसे हम लोग रीड करेंगे फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, अब ये जो मेरा एड्रेस है, ये जो मेरा 16 बिट एड्रेस है 3050H, 3050H, इसे हम लोग फेच कर लिए, इसे हम लोग रीड कर लिए, या फिर इसे हम लोग फेच कर लिए फ्रॉम मेमोरी। फेच करने के बाद, फेच करने के बाद इसे हम लोग स्टोर करते हैं इन टेम्पोरी रजिस्टर्स, इसे हम लोग स्टोर करेंगे, इसे हम लोग स्टोर करेंगे इन टेम्पोरी रजिस्टर WZ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3050, 30H, 50H। तो देखो हुआ क्या, अभी हम लोग अपने कॉल इंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ऑपकोड फैच किया, ऑपकोड फैच करके हमें समझ में आ गया कि हम लोगों को मेन प्रोग्राम से सब रूटीन प्रोग्राम में मूव करना है। तो अब हमें मूव कहाँ करना है, हमें मूव करना है 3050H पे। ठीक है, ये जो मेरा 16 बिट एड्रेस है, 16 बिट एड्रेस है 3050H, यहाँ पे हमें मूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें 16 बिट एड्रेस को अपना मेमोरी से फेच करना पड़ेगा या मेमोरी से रीड करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने मेमोरी रीड करके लोअर ऑर्डर एड्रेस बाइट को फेच कर लिया, फिर हम लोगों ने मेमोरी रीड करके हायर ऑर्डर एड्रेस बाइट को रीड कर लिया, और ये जो मेरे 16 बिट एड्रेस है, और ये जो मेरे 16 बिट एड्रेस है, इसे हम लोगों ने मेमोरी से फेच करके, या इसे हम लोगों ने मेमोरी से रीड करके अपने टेम्पोरी इंस्ट्रक्शंस पे सेव कर लिया, अपने टेम्पोरी इंस्ट्रक्शन पे सेव कर लिया, सॉरी टेम्पोरी रजिस्टर्स पे, सॉरी WZ मेरे टेम्पोरी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, WZ मेरे टेम्पोरी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये मेरे टेम्पोरी रजिस्टर्स है। WZ आर माई टेम्पोरी रजिस्टर्स, WZ आर माई टेम्पोरी रजिस्टर्स। तो टेम्पोरी रजिस्टर्स में हम लोगों ने अपने 16 बिट एड्रेस को सेव कर लिया, इसे हम लोगों ने 16 बिट एड्रेस को सेव कर लिया। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, अब देखो, अब क्या होगा, अब देखो, अब क्या होगा। अब देखो कॉल है, ठीक है,
कॉल का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को मेन प्रोग्राम से ट्रांजिशन होगा फ्रॉम सब रूटीन प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने बात किया था कि सब रूटीन प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब हो जाएगा, सब रूटीन प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाएगा और जब हम लोग वापस से रिटर्न इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग फिर से सब रूटीन प्रोग्राम से मूव करके हम लोग अपने मेन प्रोग्राम में आएंगे। रिटर्न के बाद हम लोग सब रूटीन प्रोग्राम से मूव करके हम लोग मेन प्रोग्राम में आएंगे। तो हम लोग जब मेन प्रोग्राम में आएंगे तो हम लोग कहाँ पे आएंगे? हम लोग जब मेन प्रोग्राम में आएंगे तो हम लोग का जो अब ये वाला इंस्ट्रक्शन है, जो मेरा 2009H से स्टार्ट हो रहा है, जो मेरा 2009H पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमें वापस आना है। मीन्स हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने मान लो यहाँ पे कॉल यूज किया, कॉल यूज करके हम लोग यहाँ से यहाँ चले गए, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इस वाले सब रूटीन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके वापस तो हमें मेन प्रोग्राम में ही आना है। तो वापस मेन प्रोग्राम में आने के लिए हम लोगों ने रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज किया। अब रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज किए तो हम लोग सब रूटीन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम में आ गए, सब रूटीन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम में आ गए। और हम लोग चाह रहे हैं कि अब मेरे कॉल के बाद जो इंस्ट्रक्शन है, जो मेरा मूव C, है, ये वाला पार्ट मेरा एग्जीक्यूट हो, ये वाला पार्ट मेरा एग्जीक्यूट हो, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा एग्जीक्यूट हो। तो अब ये जो मेरा इंस्ट्रक्शन है मूव C, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये मेरा 2009H से स्टार्ट हो रहा है, 2009H से स्टार्ट हो रहा है। तो अब क्या है, अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम लोग जो चाह रहे हैं कि सब रूटीन एग्जीक्यूट होने के बाद मेन प्रोग्राम पे आए, और मेन प्रोग्राम पे आए तो मेरा 2009H एग्जीक्यूट हो, ठीक है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए क्या करना है, हमें 2009H को अपने स्टैक पॉइंटर पे सेव करना पड़ेगा। 2009H को अपने स्टैक पॉइंटर पे सेव करना पड़ेगा। 2009H को अपने स्टैक पॉइंटर पे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये सेव कैसे होगा। देखो अब चलो ये देखते हैं कि ये सेव कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो स्टैक पॉइंटर है, पहले स्टैक मेमोरी जो है वो हम लोग बना लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने अपने स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज किया था 4000H पे, ठीक है। तो मेरा जो स्टैक पॉइंटर है वो इनिशियलाइज होगा 4000H पे। अब हम लोगों ने बात किया, अब हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों को 2009H को अपने स्टैक मेमोरी में सेव करना है। अब हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों को 2009H को अपने स्टैक मेमोरी में सेव करना है। क्यों सेव करना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब सब रूटीन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए और उसके बाद जब हम लोग रिटर्न को एग्जीक्यूट करें, तो वापस से मेरा जो प्रोग्राम है वो मेन प्रोग्राम पे वापस आए और वो 2009H से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके लिए यूज होगा मेरा फोर्थ मशीन साइकिल। फोर्थ मशीन साइकिल क्या है? फोर्थ मशीन साइकिल है मेरा मेमोरी राइट, ठीक है। मेमोरी राइट में क्या होगा? सबसे पहले मेरा जो ये 20H है, हायर ऑर्डर बाइट जो है 20H, मेरा जो 20H है वो यहाँ पे आके सेव होगा। वो स्टैक मेमोरी का वो यहाँ पे आके सेव होगा। देखो इसका एड्रेस क्या होगा, 3FFH 3FFEH 3FFDH, ठीक है। ये मेरा स्टैक पॉइंटर जो था वो मेरा 4000H से इनिशियलाइज हुआ था, ठीक है।
अब क्या होगा, हम लोगों ने अपने फोर्थ मशीन साइकिल में मेमोरी रीड किया, मेमोरी राइट किया। फोर्थ मशीन साइकिल में हम लोगों ने मेमोरी राइट किया। मेमोरी राइट करके हम लोगों ने, देखो बेसिकली क्या है कि जो 2009H इसे हमें सेव करना है स्टैक मेमोरी में, इसे हमें सेव करना है स्टैक मेमोरी में। तो सबसे पहले हम लोग जो हायर ऑर्डर, जो सबसे पहले हम लोग का जो ये हायर ऑर्डर बाइट था, इसे हम लोगों ने उठाया, और इसे हम लोगों ने स्टैक मेमोरी में सेव कर दिया, इसे हम लोगों ने स्टैक मेमोरी पे सेव कर दिया। ठीक है, बेसिकली देखो ये जो सेव हो रहा है, ये हो क्या रहा है, हम लोग बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन करते हैं। इंटरनली देखो क्या हो रहा है, इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या हो रहा है, जो स्टैक पॉइंटर है वो तो 4000H पे इनिशियलाइज है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे स्टैक मेमोरी में 20H को लाना है, स्टैक मेमोरी में 20H को लाना है। तो इसके लिए क्या होगा, इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन होगा, इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन होगा। मेरा जो स्टैक पॉइंटर है वो डिक्रीमेंट बाय 1 होगा, वो डिक्रीमेंट बाय 1 होगा, और 20H हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, अब आएंगे हम लोग अपने फिफ्थ मशीन साइकिल पे, अब आएंगे हम लोग अपने फिफ्थ मशीन साइकिल में। यहाँ पे फिर से हम लोग करेंगे मेमोरी राइट, यहाँ पे हम लोग फिर से करेंगे मेमोरी राइट। और अब जो मेरा लोअर ऑर्डर था, अब जो मेरा लोअर ऑर्डर बाइट था 09H, इसे हम लोग अपने स्टैक मेमोरी पे राइट कर देंगे, इसे हम लोग अपने स्टैक मेमोरी पे राइट कर देंगे। यहाँ पर भी देखो 20H जब हम लोग अपने स्टैक मेमोरी में इंसर्ट किए तो मेरा स्टैक पॉइंटर कितना हो जाएगा, 3FFFH। ठीक है, अब हमें 09H को लाना है, अब हमें स्टैक मेमोरी में 09H को लाना है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट होगा, इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन होगा, इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन होगा, और मेरा स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हो जाएगा 3FFEH, 3FFEH, और मेरा 09H मेरा स्टैक मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेरा जो 2009H है, इसका जो मेरा जो लोअर ऑर्डर है वो मेरे लोअर एड्रेस में सेव हो गया, और मेरा जो हायर ऑर्डर है वो मेरे हायर एड्रेस में सेव हो गया, वो मेरे हायर एड्रेस में सेव हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो एक कंक्लूजन हम लोग, देखो फर्स्ट कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखो फर्स्ट कंक्लूजन ये कर रहे हैं, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 1 क्या है कि जब हम लोग 2009H को अपने स्टैक पॉइंटर पे सेव, अपने स्टैक मेमोरी में सेव किए, अपने स्टैक मेमोरी में सेव किए, तो मेरा जो स्टैक पॉइंटर था, जो मेरा जो इनिशियल स्टैक पॉइंटर था, वो डिक्रीमेंट बाय 2 हो जाता है, उसका 2 बार डिक्रीमेंट हो जाता है, उसका 2 बार डिक्रीमेंट हो जाता है। और ये डिक्रीमेंट हो कैसे रहा है, इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो यही चीज हम लोग लिख सकते हैं, यही चीज हम लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फिफ्थ मशीन साइकिल of call instruction, stack pointer gets decreased by 2, gets decreased by 2। और इसके लिए हम लोगों ने बात किया था कि इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो
ये था मेरा सारा कुछ कॉल इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, ये था मेरा सारा कुछ कॉल इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। तो देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या बनते हैं, बेसिकली क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि कॉल इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन में देखो क्या देगा आपको, क्वेश्चन में देखो आपको क्या देगा, आपको स्टैक पॉइंटर का जो इनिशियल है, स्टैक पॉइंटर का जो इनिशियल वैल्यू है वो आपको दे देगा, स्टैक पॉइंटर का जो आपका इनिशियल वैल्यू है वो आपको दे देगा, ठीक है। और आपको ये बोलेगा कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन आपका स्टैक पॉइंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका स्टैक पॉइंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये तो आप इजीली निकाल ही लोगे, अभी हम लोगों ने देखा ही था कि स्टैक पॉइंटर का जो इनिशियल वैल्यू है इट गेट्स डिक्रीज्ड बाय 2 आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये पहला सेट ऑफ क्वेश्चन है। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है, दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन ये है कि आपको दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन आपका ये रहेगा, दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन में, दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन में आपको इस तरह से मेन प्रोग्राम दे देगा, आपको इस तरह से सब रूटीन प्रोग्राम दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन आपका जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है वो क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन आपका जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है वो क्या होगा। तो चलो इस चीज को समझते हैं। तो देखो अब हम लोगों ने ये देखा कि कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग मेन प्रोग्राम से स्विच कर गए और हम लोग सब रूटीन प्रोग्राम पे आ गए, हम लोग सब रूटीन प्रोग्राम पे आ गए, यहाँ पे हम लोग सब रूटीन प्रोग्राम 3050H पे आ गए, हम लोग सब रूटीन प्रोग्राम 3050H पे आ गए। प्रोग्राम काउंटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि वो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है, वो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन के बाद मेन प्रोग्राम से सब रूटीन प्रोग्राम पे आए, दैट इज हम लोग 2006H से हम लोग 3050H पे आ गए, तो मेरा जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू होगा वो हमेशा एक स्टेप आगे होगा और प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू होगा 3051H। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो बहुत बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग 2006H पे है, कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अब मेरा प्रोग्राम काउंटर क्या हो जाएगा, वो मेरा नेक्स्ट आ जाएगा 2009H हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। ये मेरा होता, मेरा 2006H पे जो इंस्ट्रक्शन होता, मान लो यहाँ पे कॉल के यहाँ पे मान लो कॉल के जगह कोई और इंस्ट्रक्शन होता, कॉल के जगह कोई और इंस्ट्रक्शन होता, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होता, तो वो एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा जो प्रोग्राम काउंटर होता वो 2009H होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने कॉल कर लिया, हम लोगों ने कॉल इंस्ट्रक्शन यूज किया, कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करके हम लोग मेन प्रोग्राम से सब रूटीन प्रोग्राम में चले गए, तो इसलिए मेरा जो प्रोग्राम काउंटर है वो 2009H नहीं होगा। ये 2009H को तो हम लोग अपने स्टैक मेमोरी में सेव कर लेंगे, जिससे क्या है कि जब हम लोग वापस रिटर्न करके वापस सब रूटीन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम में आए तो हम लोग यहाँ से एग्जीक्यूशन 2009H से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें। लेकिन आइडियली मेरा जो प्रोग्राम काउंटर है वो मेरा क्या होगा, कॉल के बाद जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मान लो कॉल के बाद हम लोग 3050H पे गए, तो इसके जस्ट बाद जो मेमोरी होगा वो मेरा सिग्निफाई करेगा प्रोग्राम काउंटर, दैट इज प्रोग्राम वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर विल बी 3051H, वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर विल बी 3051H। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने कॉल इंस्ट्रक्शन को समराइज करें, अगर हम लोग अपने कॉल इंस्ट्रक्शन को समराइज करें तो देखो इसमें बेसिकली होगा क्या, इसमें देखो बेसिकली होगा क्या, कॉल इंस्ट्रक्शन समराइज करें तो इसमें बेसिकली होता क्या है। जैसे मेरा ये यही वाला ले लो, फिर से ये ले लेते हैं 2006H,
कॉल 3050h। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाला कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप मान लो कि हम लोग मेन प्रोग्राम से स्विच कर गए और हम लोग चले गए सब रूटीन प्रोग्राम पे। और सब रूटीन प्रोग्राम के किस एड्रेस पे चले गए? हम लोग सब रूटीन प्रोग्राम के 3050h एड्रेस पे चले गए। ठीक है, और इसके वजह से मेरा जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू हो जाएगा वो एक स्टेप आगे, दैट इज 3051h हो जाएगा, 3051h हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हम लोग ट्रांजिशन किए फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम, इसके दौरान हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मान लो कि मेरा जो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था 2009h, मूव C, A, मूव C, A। तो जब हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन को यूज करके मेन प्रोग्राम से सब रूटीन प्रोग्राम में चले गए, तो उस केस में हम लोग ये करते हैं कि कॉल के बाद जो इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस था उसे हम लोग स्टैक पॉइंटर में उसे हम लोग स्टैक मेमोरी में सेव कर लेते हैं, स्टैक मेमोरी में सेव कर लेते हैं, तो स्टैक मेमोरी में 2009h सेव हो जाएगा। और इसके वजह से क्या होता है, स्टैक पॉइंटर जो है वो मेरा 2 टाइम्स डिक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, 200h6h के बाद जो मेरा एड्रेस आएगा, मतलब कि 2006h में तो कॉल आ गया, कॉल 3 बाइट है, तो 3 बाइट के बाद जो मेरा एड्रेस आ रहा है 2009h, उसे हम लोग स्टैक मेमोरी में सेव कर लेते हैं। और स्टैक मेमोरी में सेव करने के वजह से मेरा जो स्टैक पॉइंटर है उसका 2 बार डिक्रीमेंट हो जाता है, तो मोटा मोटा कॉल इंस्ट्रक्शन काम इस तरह से कर रहा है। मोटा मोटा मेरा जो कॉल इंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब अगर आपको ये समझ में आया तो चले अब हम लोग अपने रिटर्न इंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं। तो देखो, अब रिटर्न पे फोकस करते हैं। तो हम लोग मेन प्रोग्राम से सब रूटीन प्रोग्राम पे आ गए। अब मान लो कि आपका ये सब रूटीन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और अब हम लोग 3050h पे हम लोग रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज किए। इट मीन्स कि अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से रिटर्न करके वापस मेन प्रोग्राम पे आए, और वापस मेन प्रोग्राम पे आके मेरा कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, मेरा 2009h एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज मूव C, A, ये वाला मेरा एग्जीक्यूट हो। मोटा मोटा मेरा मकसद यही है कि हम लोग अगर रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो हम लोग वापस सब रूटीन से मेन प्रोग्राम में आए और मेरा मूव C, A एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए। तो चलो अब हम लोग देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो रिटर्न मेरा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा मशीन साइकिल है वो आएगा मेरा ऑपकोड फेच। ऑपकोड फेच किए तो हमें ये समझ में आ गया कि हम लोग रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोगों को सब रूटीन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम पे जाना है और मेन प्रोग्राम में जाके हमें 2009h को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अब मेरा जो सेकेंड मशीन साइकिल में हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोगों को ये जो एड्रेस है 2009h, ये जो एड्रेस है जो हम लोगों ने स्टैक मेमोरी में सेव कर रखा था, ये जो एड्रेस है 2009h जो हम लोगों ने स्टैक मेमोरी में सेव कर रखा था, अब हमें इस एड्रेस को स्टैक मेमोरी से फेच करना है। अब हमें इस एड्रेस को स्टैक मेमोरी से फेच करना है। फेच करके हम लोग को वापस अपने इस मेमोरी एड्रेस में जाना है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं
कि हम लोग अपने एड्रेस 2009H को किस तरह से फैच करते हैं। तो पहला मशीन साइकिल ऑपकोड फैच हो गया, दूसरा मशीन साइकिल होगा मेमोरी रीड। इस मेमोरी रीड में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इस मेमोरी रीड में हम लोग स्टैक मेमोरी में आएंगे, स्टैक मेमोरी में आएंगे और यहाँ जो मेरा लोअर ऑर्डर बाइट है, जो मेरा लोअर एड्रेस पे अवेलेबल है, दैट इज 09H, इसे हम लोग फैच करेंगे, इसे हम लोग फैच करेंगे। 09H यहाँ पे फैच हो गया। अब हम लोग तीसरे मशीन साइकिल पे आते हैं। तीसरे मशीन साइकिल में हम लोग फिर से मेमोरी रीड करेंगे। तीसरे मशीन साइकिल में हम लोग फिर से मेमोरी रीड करेंगे। इसमें क्या होगा, मेरा जो हायर बाइट था, मेरा जो हायर बाइट था, जो मेरा हायर एड्रेस पे अवेलेबल है, दैट इज 20H, इसे हम लोग फैच कर लेंगे, इसे हम लोग फैच कर लेंगे। ठीक है, इसे हम लोग फैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि हम लोग 2009H इसे हम लोग फैच कर लिए। फैच करके ये सेव कहाँ पे हो रहा है, फैच करके हम लोग इसे अपने टेम्पोररी रजिस्टर्स, फैच करके इसे हम लोग अपने टेम्पोररी रजिस्टर WZ में स्टोर कर लिए। फैच करके हम लोग इसे अपने टेम्पोररी रजिस्टर WZ पे स्टोर कर लिए। ठीक है, WZ पे स्टोर कर लिए, WZ पे स्टोर कर लिए, WZ पे स्टोर कर लिए। अब देखो, अब आप देखो कि अगर हम लोग अपने 09H और 20H इसे हम लोग अगर अपने स्टैक मेमोरी से फैच कर लिए, तो अब मेरा जो स्टैक पॉइंटर है वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मेरा जो स्टैक पॉइंटर है उसका वैल्यू वापस 4000H हो जाएगा। इट मीन्स कि यहां से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन टू, कंक्लूजन टू, after execution, after execution of third machine cycle of return instruction, stack pointer is increased by 2। हम लोग जब अपने कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने बोला था कि कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा स्टैक पॉइंटर का जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स डिक्रीमेंट हो जाता है, वो 2 टाइम्स डिक्रीमेंट हो जाता है। और अब हम लोग ये कह रहे हैं कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा जो स्टैक पॉइंटर का वैल्यू है वो 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाता है, वो 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाता है। यही देखो आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाएगा। एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन देगा, आपको स्टैक पॉइंटर का एक वैल्यू दे देगा, आपको स्टैक पॉइंटर का एक वैल्यू दे देगा और आपको बोलेगा कि आपने रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया है, तो अब बताओ आपका स्टैक पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको अपने स्टैक पॉइंटर के वैल्यू को 2 टाइम इंक्रीमेंट कर देना है, आपको अपने स्टैक पॉइंटर के वैल्यू को 2 टाइम इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब देखो क्या हुआ, रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद 2009H मेरे टेम्पोररी रजिस्टर्स में आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो सब, हम लोग अब अपना स्विच कर गए, हम लोग अब स्विच कर गए फ्रॉम सब रूटीन प्रोग्राम टू मेन प्रोग्राम, और हम लोग 2009H पे आ गए, 2009H पे आ गए। अब आप बताओ कि प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू क्या होगा, अब आप बताओ कि प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे कि प्रोग्राम काउंटर तो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है, इट मीन्स कि उसका वैल्यू होगा 200AH। ठीक है,
तो ये आपका सेकंड प्रोबेबल क्वेश्चन है। आपको इस तरह से मेन प्रोग्राम दे देगा, आपको सब रूटीन प्रोग्राम दे देगा और आपको बोलेगा कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आपका पीसी का वैल्यू क्या है। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आपका पीसी का वैल्यू 2009H ये नहीं होगा, आपका प्रोग्राम काउंटर हमेशा एक स्टेप आगे आता है। इस वाले एड्रेस पे तो आप आ गए हो, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो आपका प्रोग्राम काउंटर तो हमेशा एक स्टेप आगे है, दैट इज प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू होगा 200AH। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो डिस्कशन था रिलेटेड टू कॉल एंड इंस्ट्रक्शन, ये आपको अच्छे से समझ में आया, ये आपको अच्छे से समझ में आया। बेसिकली हुआ क्या, कॉल कॉल को यूज करेंगे तो मेन प्रोग्राम से सब रूटीन प्रोग्राम में स्विच कर गए, ठीक है, और रिटर्न पे किए तो सब रूटीन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम में स्विच कर गए। ठीक है, बेसिकली यही हो रहा है। हाँ, बीच में किस तरह से स्टैक पॉइंटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, किस तरह से स्टैक पॉइंटर का डिक्रीमेंट हो रहा है, किस तरह से प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू चेंज होगा व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम, किस तरह से प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू चेंज होगा व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम सब रूटीन प्रोग्राम टू मेन प्रोग्राम, ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहा है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेंथ एंड नंबर ऑफ टी स्टेट्स ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो चलें आगे चलते हैं। चलो, अब हम लोग अपने नए इंस्ट्रक्शन सेट को देखते हैं, दैट इज मशीन बेस्ड इंस्ट्रक्शन, दैट इज मशीन बेस्ड इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को डील करेंगे, इसमें हम लोग डील करेंगे DI को, दैट इज डिसेबल इंटरप्ट। फिर हम लोग डील करेंगे EI को, दैट इज इनेबल इंटरप्ट। फिर हम लोग डील करेंगे सिम को, दैट इज सेट इंटरप्ट मास्क। फिर हम लोग डील करेंगे रिम को, दैट इज रीड इंटरप्ट मास्क। फिर हम लोग डील करेंगे NOP को, दैट इज नो ऑपरेशन। और फिर हम लोग डील करेंगे हॉल्ट को। तो ये 6 इंस्ट्रक्शन हम लोग इस इंस्ट्रक्शन सेट में डील करेंगे, जिसे हम लोग मशीन बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जिसे हम लोग मशीन बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है DI, इसका फुल फॉर्म है डिसेबल इंटरप्ट। तो इसके फुल फॉर्म से ही हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या करेगा। इसके फुल फॉर्म से ही हम लोग समझ सकते हैं कि इसका रोल क्या है। इट्स रोल विल बी टू डिसेबल ऑल द इंटरप्ट्स। बट हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि अगर हम लोग ट्रैप ले तो ट्रैप को हम लोग कभी भी डिसेबल नहीं कर सकते हैं, ट्रैप को हम लोग कभी भी डिसेबल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो डिसेबल इंटरप्ट है ये सभी इंटरप्ट को डिसेबल कर देगा, ये सभी इंटरप्ट को डिसेबल कर देगा अदर देन ट्रैप, अदर देन ट्रैप, क्योंकि ट्रैप को हम लोग डिसेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इट्स ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग लेंथ का बात करें, इसका अगर हम लोग लेंथ का बात करें तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसका अगर हम लोग मशीन साइकिल का बात करें तो 1 है, दैट इज ऑपकोड फेच। इसका अगर हम लोग टी स्टेट्स का बात करें तो ये 4 है। ठीक है, तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को कोई भी इंटरप्ट परेशान करे, तो हम लोग प्रोग्राम लिखने से पहले DI यूज कर लेते हैं, जिससे कोई भी इंटरप्ट हम लोग को परेशान नहीं करेगा अदर देन ट्रैप। ट्रैप अगर इनिशिएट होगा तो वो तो हमें परेशान करेगा ही करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
अब हम लोग दूसरे इंटरप्ट में आते हैं, EI, दैट इज इनेबल इंटरप्ट। अब इसका रोल क्या है, मान लो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम से पहले हम लोग DI यूज कर लेते हैं, जिससे कोई भी इंटरप्ट हम लोग को परेशान ना करे। लेकिन प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, EI लिख देते हैं, जिससे क्या है कि मेरे जो भी इंटरप्ट डिसेबल हो गए थे वो वापस से इनेबल हो जाए, वो वापस से वर्क करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इसका भी अगर हम लोग बात करें तो इसका जो लेंथ है, ये मेरा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये मेरा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसका जो मशीन साइकिल है, मशीन साइकिल 1 हो गया, ऑपकोड फेच। इसका जो टी स्टेट्स है वो 4 है, टी स्टेट्स 4 है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चले अब हम लोग अपने तीसरे इंस्ट्रक्शन के बात करते हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शन था हम लोगों का सिम। सिम है सेट इंटरप्ट मास्क। इसको हम लोग समझते हैं। इसका भी अगर हम लोग लेंथ ले तो ये मेरा एक तरह से 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये मेरा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल 1 है, ऑपकोड फेच, टी स्टेट्स 4 है, टी स्टेट्स 4 है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सिम को समझते हैं। तो देखो, सिम का फुल फॉर्म क्या है, सेट इंटरप्ट मास्क। अब सिम का देखो पर्पस क्या है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग DI यूज करते हैं, अगर हम लोग DI यूज करते हैं तो क्या होगा, मेरे जितने भी इंटरप्ट्स है, मेरे जितने भी इंटरप्ट्स है अदर देन ट्रैप, वो मेरे डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, वो मेरे डिसेबल हो जाएंगे। बट मैं क्या चाह रहा हूं, कि मेरे सारे इंटरप्ट्स डिसेबल ना हो। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे इंटरप्ट्स डिसेबल ना हो। I want to select some interrupts which will be disabled, but I want some interrupts to keep working for me. ठीक है, अगर हम लोग DI यूज करते हैं, फिर तो क्या है कि ट्रैप के अलावा सारे जितने भी इंटरप्ट्स है वो डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, मेरे इंटरप्ट्स है कितने, देखो मेरे इंटरप्ट्स है ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR। तो अगर हम लोग DI यूज करेंगे तो मेरे ये जितने भी इंटरप्ट्स है वो डिसेबल हो जाएंगे। बट क्या है कि मान लो मैं चाहता हूं कि RST 7.5 डिसेबल हो, RST 6.5 डिसेबल हो, बट RST 5.5 या INTR ये डिसेबल ना हो। इट मीन्स कि इन चारों इंटरप्ट्स में मैं चूज कर सकूं कि कौन सा इंटरप्ट डिसेबल होगा और कौन सा इंटरप्ट डिसेबल नहीं होगा। तो देखो, ये चूज करने का ऑप्शन DI के साथ तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि DI यूज करते ही ये चारों इंटरप्ट डिसेबल हो जाएंगे। बट अगर मुझे इन चारों में से इंटरप्ट्स को चूज करना है कि कौन सा मैं डिसेबल करूं या कौन सा मैं इनेबल करूं, तो उसके लिए क्या है कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं सिम को यूज कर लूंगा। उसके लिए क्या है कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग सिम को यूज करके अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है,
ये हो गया मेरा D0 बिट, ये हो गया D1, ये हो गया D2, ये हो गया D3, ये हो गया D4, ये हो गया D5, ये हो गया D6, ये हो गया D7। ये मेरे 8 बिट्स है। अब आप बताओगे कि अब आप पूछोगे कि सर ये मेरे 8 बिट्स फ्रॉम D0 टू D7 है क्या? तो ये बेसिकली क्या है कि वैल्यू ऑफ अकुमुलेटर है। मेरा जो सिम है वो वैल्यू ऑफ अकुमुलेटर को उठाता है, वो कंटेंट ऑफ अकुमुलेटर को उठाता है, वो कंटेंट ऑफ अकुमुलेटर को उठाता है और उसके बाद वो वर्क करता है। तो ये जो D0 से D7 है, ये है मेरा, यहां लिख सकते हैं कंटेंट ऑफ अकुमुलेटर, कंटेंट ऑफ अकुमुलेटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसे अभी हम हटा देते हैं, थोड़ा सा पेज मेरा क्लियर रहे इसलिए इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे आएगा M5.5, M6.5, M7.5, MSE, ये मेरा डोंट केयर है। सॉरी, यहाँ पे आएगा मेरा R7.5, ये मेरा डोंट केयर है। ये है SOE, ये है SOD। अब देखो पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं। SOD का फुल फॉर्म है सीरियल आउटपुट डेटा। SOE का फुल फॉर्म है सीरियल आउटपुट डेटा इनेबल। R7.5, चलो देखते हैं। MSE क्या है? मास्क सेट इनेबल। चलो अब देखते हैं कि सिम वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, मान लो कि मुझे अपने इंटरप्ट 5.5 को मास्क करना है। मुझे अपने इंटरप्ट 5.5 को मास्क करना है और 6.5 को मास्क नहीं करना है, 7.5 को मास्क नहीं करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अपने अकुमुलेटर के D0 बिट को उस केस में हम लोग अपने अकुमुलेटर के D0 बिट को 1 कर देंगे। अगर मेरा अकुमुलेटर का D0 बिट 1 है तो मेरा जो इंटरप्ट 5.5 है वो मास्क हो जाएगा। 6.5 को मास्क नहीं करना है इसलिए D1 बिट को हम 0 कर देंगे। 7.5 को मास्क नहीं करना है इसलिए हम लोग इस वाले D2 बिट को 0 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मान लो कि मुझे 7.5 को भी मास्क करना है, 5.5 को भी मास्क करना है, लेकिन 6.5 को नहीं करना है। उस केस में हम लोग 7.5 के D2 बिट को 1 करेंगे, D1 को 0 करेंगे, D0 को 1 करेंगे। ऐसे करने से क्या है, 5.5 और 7.5 मेरा मास्क हो जाएगा, 6.5 मेरा मास्क नहीं होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि DI में जो हम लोग को दिक्कत आ रहा था कि DI में मेरे सारे इंटरप्ट मास्क हो जा रहे थे, उस चीज को यहाँ पे हम लोग ओवरकम कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इंटरप्ट्स को मास्क कर पा रहे हैं। जिसका जरूरत है, जिसको मास्क करना है उसको मास्क कर ले रहे हैं, जिसको मास्क नहीं करना है उसे हम लोग मास्क नहीं कर रहे हैं। कैसे? हम लोग अकुमुलेटर के कंटेंट को हम लोग अपने अकॉर्डिंग वेरी करा के ये चीज अचीव कर सकते हैं।
बेसिकली क्या है कि मान लो हम लोग पहले एक अकोमुलेटर के कंटेंट में हम लोग अपने अकोमुलेटर का एक कंटेंट बनाए, ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना सिम इंस्ट्रक्शन यूज कर लेंगे, ठीक है। और जैसे इस तरह से कर लो, देखो एम वी आई ए 07, मतलब 07 मेरे ए में आ गया, 07 मेरे ए में आ गया, फिर हम अपना इंस्ट्रक्शन यूज कर लेंगे सिम। तो अब सिम क्या है, मेरे कंटेंट ऑफ अकुमुलेटर जो कि 07 है उसे उठाएगा और 07 के बिट्स के अकॉर्डिंग वो अपना रोल परफॉर्म करेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एमएससी क्या है, मास्क सेट इनेबल क्या है। तो देखो अभी जो हम लोग यहाँ पे अपने इंटरप्ट्स को मास्क कर रहे थे, अनमास्क कर रहे थे, ये वाला फंक्शनैलिटी तभी इनेबल होगा, ये वाला फंक्शनैलिटी तभी इनेबल होगा जब मेरा एमएससी 1 है। जब मेरा एमएससी 1 है तब हम अपने इस तीनों इंटरप्ट्स को मास्क या फिर अनमास्क कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा एमएससी 0 हो जाता है, अगर मेरा एमएससी 0 हो जाता है तो मेरा D2 से D0 जो बिट है वो इग्नोर हो जाता है, वो इग्नोर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये तीनों, अगर हमें इस तीनों इंटरप्ट को अपने कंट्रोल में लेना है, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग इस इंटरप्ट को मास्क करें या अनमास्क करें, तो मेरा एमएससी का बिट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर मेरा एमएससी का बिट 1 है तभी हम लोग इस तीनों इंटरप्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा एमएससी का बिट 0 हो गया तो मेरा जो D0, D1 और D2 बिट है ये हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये कंप्लीटली इग्नोर हो जाएगा, ये कंप्लीटली इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये R7.5 का क्या मतलब है, अगर मेरा D4 बिट, अगर मेरा D4 बिट 1 होता है तो उस केस में मेरा जो मेरा जो इंटरप्ट है RST 7.5 वो रीसेट हो जाता है। मान लो हमें अपने इंटरप्ट 7.5 को रीसेट करना है, मान लो हमें अपने इंटरप्ट 7.5 को रीसेट करना है, तो उस केस में हमें अपने अकुमुलेटर के D4 बिट को 1 करना पड़ेगा। उस केस में हमें अपने अकुमुलेटर के D4 बिट को 1 करना पड़ेगा, ठीक है। D5 पे आते हैं, ये तो डोंट केयर है, इसका कोई पर्पस नहीं है। D6 में आते हैं, इसका है सीरियल आउटपुट डेटा इनेबल। देखो सिम इंस्ट्रक्शन का एक और यूजफुलनेस क्या है कि यहां से मेरा जो D7 बिट ऑफ अकुमुलेटर है, जो मेरा D7 बिट ऑफ अकुमुलेटर है, इट एक्ट्स एज ए सीरियल आउटपुट डेटा। अगर हमें कोई सीरियल आउटपुट डेटा लेना है, ठीक है, तो वो मेरा अकुमुलेटर के D7 बिट को हम लोग लेते हैं, अकुमुलेटर के D7 बिट को लेते हैं, ठीक है। मान लो अकुमुलेटर का एक कंटेंट है, अकुमुलेटर का एक कंटेंट है और उसके बाद हम लोग अपने सिम इंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अकुमुलेटर का जो D7 बिट होगा वो मेरा सीरियल आउटपुट डेटा बन जाएगा। लेकिन इस D7 बिट को हम तभी एक्सेस कर सकते हैं अगर मेरा D6 बिट 1 हो, अगर मेरा सीरियल आउटपुट डेटा इनेबल 1 है, उस केस में ही हम लोग अपने अकुमुलेटर के D7 बिट को एक्सेस कर सकेंगे और मेरा D7 बिट सीरियल आउटपुट डेटा बन जाएगा। लेकिन अगर मेरा SOE 0 है तो उस केस में मेरा जो D7 बिट है, उस केस में मेरा जो D7 बिट है वो एक तरह से डिसेबल हो जाता है, वो एक तरह से डिसेबल हो जाता है। तो आई होप कि आपको अब सिम का जो फंक्शनैलिटी है, आई होप कि आपको सिम का जो फंक्शनैलिटी है ये समझ में आया। तो अगर आपको ये समझ में आया, चलो हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलो मान लो आपको एक ये प्रोग्राम दिया गया है, 2000H है, ये कह रहा है मूव इमीडिएट A FFH।
उसके बाद 2002H हम लोग सिम इंस्ट्रक्शन लगा दिए। तो अब देखो ये कैसे वर्क होगा, बताओ। हम लोग का जो वैल्यू ऑफ अकुमुलेटर है वो कितना हो जाएगा, FFH। ठीक है, अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, हम लोग से पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ इंटरप्ट मास्क्ड, और दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज सीरियल आउटपुट डेटा। तो हम लोगों का जो वैल्यू ऑफ अकुमुलेटर है वो FFH है। उसके बाद हम लोग सिम इंस्ट्रक्शन लगाए, सिम इंस्ट्रक्शन लगाते ही हम लोग अब वैल्यू ऑफ अकुमुलेटर को कंसिडर करेंगे और फिर चीजों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू ऑफ अकुमुलेटर को पुट कर देते हैं, FF है तो यहाँ पे सारा ये आ गया। अब हम लोग अगर सिम इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये है M5.5, M6.5, M7.5, MSE, R7.5, ये तो डोंट केयर है, ये है SOE, ये है SOD। अब आपसे पूछ रहा है कि मेरे कितने इंटरप्ट मास्क्ड हुए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि M5.5, M6.5, M7.5 तीनों का जो बिट है वो 1 है। इट मीन्स कि ये तीनों इंटरप्ट मास्क हो रहा है। बट आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा जो MSC है उसका वैल्यू 1 है या 0 है, क्योंकि MSC का वैल्यू अगर 0 हो गया फिर तो हम लोग इस तीनों इंटरप्ट को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर MSC का वैल्यू 1 है तब हम लोग इस तीनों इंटरप्ट को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि MSC का वैल्यू तो 1 है, इट मीन्स कि हम लोग इस तीनों इंटरप्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि इस तीनों का वैल्यू 1 है। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ इंटरप्ट मास्क्ड हो जाएगा 3। मेरा 5.5, 6.5, 7.5 तीनों मास्क हो रहे हैं। अब आते हैं हम लोग SOD पे। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि मेरा जो D7 बिट ऑफ अकुमुलेटर है, अगर हम लोग सिम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो जो मेरा D7 बिट ऑफ अकुमुलेटर है वही देता है मेरा सीरियल आउटपुट डेटा। बट यहाँ पर भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ D7 से पहले हम लोग को D6 बिट रेफर करना पड़ेगा। अगर मेरा जो D6 बिट है वो 1 है तभी हम लोग D7 बिट को एक्सेस कर पाएंगे। अगर D6 से बिट मेरा 0 हो जाएगा तो फिर हम लोग D7 बिट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि D6 बिट तो 1 है, इट मीन्स कि हम लोग D7 दैट इज SOD बिट को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, और SOD में हम लोग को वैल्यू मिल रहा है 1। इट मीन्स कि जो सीरियल आउटपुट डेटा है वो मेरा 1। तो आई होप कि ये सिम इंस्ट्रक्शन भी आपको क्लियर हुआ। तो इस तरह से ही स्मॉल चीजें आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही इजी है। आपको अगर पता रहेगा कि सिम का क्या डिस्क्रिप्शन है तो आप उसे इजिली बना लोगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज रिम। अब हम लोग अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आते हैं दैट इज रिम। इसका फुल फॉर्म है रीड इंटरप्ट मास्क। इसका भी अगर हम लोग लेंथ ले तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल ले तो 1 है, ऑपकोड फेच। टी स्टेट्स ले तो 4 है। अगर यहाँ पे हम लोग इसके एड्रेसिंग मोड के बारे में बात करें, अगर हम लोग एड्रेसिंग मोड के बारे में बात करें तो ये आएगा मेरा इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ये आएगा मेरा इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ये चीज आप सिम में भी ऐड कर लो। सिम का भी जो एड्रेसिंग मोड होता है, सिम का भी जो एड्रेसिंग मोड होता है ये मेरा इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होता है। ठीक है, अब चलो सिम की तरह रिम का भी वही फंडामेंटल है कि ये अपने अकुमुलेटर को ये अपने अकुमुलेटर के कंटेंट को उठाता है, ये अपने अकुमुलेटर के कंटेंट को उठाता है। ठीक है, अकुमुलेटर के कंटेंट को उठाकर ये डिफरेंट
स्टेटस बताता है। ठीक है, क्या क्या बताता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया डी नॉट बिट ऑफ अकुमुलेटर, ये हो गया D1 बिट, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ये जो स्टार्टिंग के ये जो अपने D0 से लेके D3 है, ये जो बिट्स है ये रिम और सिम का सेम होता है। यहाँ पर भी आप लिखो M5.5, M6.5, M7.5, IE, ये है IE। IE का मतलब है इंटरप्ट इनेबल, इंटरप्ट इनेबल। अब देखो बेसिकली क्या है कि अगर मेरा IE 1 होगा तभी हम लोग D0, D1, D2 को एक्सेस कर पाएंगे, और अगर मेरा IE 0 हो गया तो मेरा जो D0, D1, D2 है ये इग्नोर हो जाता है, इसे हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही है, अगर हम यहाँ पर भी क्या है कि अगर हम लोगों को इस तीनों इंटरप्ट में से अपने अकॉर्डिंग इंटरप्ट्स को मास्क करना है तो हम लोग इसे अपने अकॉर्डिंग मास्क कर सकते हैं। मान लो अगर इसका मेरा D0, D1, D2 का वैल्यू 0, 0, 1 हो गया, इसका मतलब ये है कि मेरा इंटरप्ट 7.5 है वो मास्क हो गया, और 6.5, 5.5 मेरा अनमास्क्ड है। ठीक है, लेकिन ये चीज हम लोग एक्सेस तभी कर पाएंगे जब मेरा इंटरप्ट इनेबल का बिट 1 रहेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे चले तो ये है, यहां आ जाएगा I 5.5, I 6.5, I 7.5, और ये हो गया SID। अब देखो ये I 7.5, I 6.5, I 5.5 क्या है। ठीक है, अगर मान लो इनका वैल्यू अगर इनका वैल्यू अगर 1 है तो ये बता रहा है कौन से इंटरप्ट्स पेंडिंग है, कौन से इंटरप्ट पेंडिंग है, कौन से इंटरप्ट पेंडिंग है। ये जो मेरे 3 बिट्स है D6, D5, D4, ये हमें बताता है कौन से इंटरप्ट्स पेंडिंग है या कौन से इंटरप्ट्स नॉन पेंडिंग है। मान लो मेरा जो D6, D5, D4 है इसका वैल्यू आ गया 0, 1, 1, तो ये बता रहा है कि मेरा जो इंटरप्ट है 6.5 और जो मेरा इंटरप्ट है 5.5 ये मेरा पेंडिंग है, और मेरा जो इंटरप्ट 7.5 है ये मेरा पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो 3 बिट है ये बता रहा है मेरा स्टेटस ऑफ पेंडिंग इंटरप्ट, ये बता रहा है स्टेटस ऑफ पेंडिंग इंटरप्ट। अब ये SID क्या है, ये है सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल इनपुट डेटा। जैसे हम लोग सिम में देख रहे थे सीरियल आउटपुट डेटा हमें वहां से मिल रहा था फ्रॉम द D7 बिट ऑफ अकुमुलेटर, रिम में हम लोगों को सीरियल इनपुट डेटा मिलता है फ्रॉम द D7 बिट ऑफ अकुमुलेटर। ठीक है, बहुत ही इजी है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। मान लो आपको एक ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, आपको बता दिया कि आपका जो वैल्यू ऑफ अकुमुलेटर है वो ये है FFH है, और आपने फिर रिम इंस्ट्रक्शन लगा दिया, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ इंटरप्ट मास्क्ड, नंबर ऑफ इंटरप्ट पेंडिंग और SID। तो देखो आपको अब तो ये पता ही है रिम का जो फॉर्मेट है वो क्या था, M5.5, M6.5, M7.5, IE, I 5.5,
I6.5, I7.5 और SID, ये आपका रिम का फॉर्मेट है। तो अब देखो, अब हम लोगों को निकालना है कौन कौन से इंटरप्ट मास्क्ड है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे D3 बिट पे आते हैं और देखते हैं कि ये 1 है या 0 है। अगर ये 1 होगा तभी हम लोग ये 3 बिट्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये 1 है और उसके बाद हम लोग ये 3 बिट्स को जब एक्सेस किए तो हम लोग देख रहे हैं कि D0, D1, D2 तीनों 1 है। इट मीन्स कि ये जो मेरे तीनों इंटरप्ट है ये मार्क्स्ड है, मीन्स मेरे तीनों इंटरप्ट मार्क्स्ड है। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इंटरप्ट पेंडिंग। नंबर ऑफ इंटरप्ट पेंडिंग हमको बताएगा D4, D5, D6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D4, D5, D6 तीनों 1 1 1 है। तो नंबर ऑफ इंटरप्ट पेंडिंग कितना हो गया? 3 हो गया। अब मेरा है सीरियल इनपुट डेटा। तो जो मेरा D7 बिट है वो बताता है सीरियल इनपुट डेटा। तो सीरियल इनपुट डेटा का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर आपको रिम और सिम का फॉर्मेट याद है, अगर आपको रिम और सिम का फॉर्मेट याद है और आपको अकुमुलेटर का वैल्यू पता है तो आप वहां से डिफरेंट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चले आगे चलते हैं। अब हम लोग अपने दूसरे इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। ये है NOP, ये है नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन, मान लो हमें अपने प्रोग्राम में डिले क्रिएट करना है, हमें अपने प्रोग्राम में डिले क्रिएट करना है। तो उस केस में हम लोग NOP यूज करते हैं, क्योंकि NOP बेसिकली क्या है? कुछ भी काम नहीं करता है। NOP का कोई भी काम नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि आपका 4 T स्टेट्स कंज्यूम करेगा, आपका 4 T स्टेट्स कंज्यूम करेगा। इट मीन्स कि आपके प्रोग्राम में ये डिले लाएगा, ये आपके प्रोग्राम में डिले लाएगा। तो इसका अगर हम लोग लेंथ देखें, इसका अगर हम लोग लेंथ देखें तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसका मशीन साइकिल देखें तो ये 1 है। आउटपुट फेच टी स्टेट्स देखें तो इसमें 4 टी स्टेट्स कंज्यूम करता है। बेसिकली ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली अपने प्रोग्राम में डिले लाने के लिए प्रोग्रामर इसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Now coming to the next instruction, that is halt. HLT क्या है? halt है। इसका लेंथ क्या है? 1 बाइट। मशीन साइकिल 1, ऑपकोड फेच। मशीन साइकिल इसमें 2 है, सॉरी मशीन साइकिल, ये आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबको लगता है कि इसका मशीन साइकिल 1 है, नहीं, इसका मशीन साइकिल 2 है। ऑपकोड फेच एंड बस आइडल। ठीक है, इसका जो टी स्टेट्स है वो 5 है। 5 फॉर ऑपकोड फेच, 1 फॉर बस आइडल। तो हॉल्ट बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब प्रोग्राम को हमें फिनिश करना है तो हम लोग लास्ट में जो लास्ट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो हम लोग हॉल्ट यूज करते हैं, जिससे जो प्रोसेसर है वो काम करना बंद कर दें। प्रोसेसर स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर वी एग्जीक्यूट हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। इसका लेंथ 1 बाइट है। मशीन साइकिल 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपकोड फेच एंड बस आइडल। टी स्टेट्स 5 है, 4 फॉर ऑपकोड फेच एंड 1 फॉर बस आइडल। ठीक है, आई होप कि आपको ये 6 इंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ, आपको ये 6 इंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ। ठीक है।